बार ये करिए, म्यूट है क्या यहाँ तो? हाँ म्यूट नहीं है। नहीं आपकी आवाज आ रही है। फुल स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा? आवाज आई है सर। मैसेज तो करने के लिए मैसेज लिख रहे हैं। Hello, sir. We are also linked to the YouTube page, YouTube link also. NEIAH live. We are in live through YouTube. Chat. NEIAH Shillong. YouTube and NEIAH Shillong. गुड इवनिंग होना था। साउंड नहीं ऑन हो रही है। व्यास सर नमस्ते। नमस्ते जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है सर, एकदम बढ़िया सर। नमस्कार। आप दिखाई नहीं दे रहे, बस सुनाई दे रहे हैं। मैं नहीं दिखाई दे रहा सर। बस अभी देख रहे हैं। यस अब दिख रहे हैं। वही मैं देख लेता हूँ, फिर बाद में ना दिखना है ना आवाज सुनाई देना, फिर तो बस केवल सुनना है अपने को। कैसे है सर, कैसे है? बस एकदम बढ़िया लग रहा है सर। और गुवाहाटी में क्या हाल है, ठीक है? हाँ जी सर, सर्वर कोरोना जी। और खगेन जी अभी तक नहीं दिख रहे हैं। डॉक्टर खगेन नहीं दिखे अभी तक। हाँ खगन आ रहा है, खगन आ रहा है, खगन आ रहा है। और डॉक्टर साहब कैसे हैं? सर बस ठीक है। नमस्कार, सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? जी सर एकदम ठीक। सभापर भी आते কোন জয়েন করছে চাইলো জয়েন করেছিল না জয়েন করেছিল না मैं ये एसपी मिश्रा, सुभादित्य ठाकुर, अश्विनी भार्गव, जगेश मिश्रा, महेश व्यास, participant. तो कहीं कोई मीटिंग कोई सेमिनार को बाहर तारने नते से कहीं शिलोंग न सेंब कोई कॉलेज की प्रिंसिपल क्या होगा कॉलेज अभी कहीं गुवाहाटी की कोई अटेंड तो बनी देना कोई नहीं बनी देना
respected all, I would kindly like to request you all to unmute yourself. Everyone is kindly requested to unmute. एक बार आप सभी को अनम्यूट कर दीजिए और उसके बाद जो बोलेंगे वो अपने आप म्यूट कर दीजिए, जो बोलेंगे वो अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी शिवादित्य जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कुशल जी एकदम ठीक है। आप दिखाई नहीं दे रहे अभी। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहे, आवाज सुनाई दे रही है बस। अब दिख जाऊंगा। जी जी अब ठीक है, ठीक। नमस्कार जी। नमस्कार। काम करो रो डाटा भराइला नि गला क्या डाटा भराइला नि ठीक है, ठीक है। देखो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस नीचे आयुष एमबी दिसे ना डाटा है गयो मैं लिप करि दे र हट जातो लिप करि देउ दि पेले डाटा भराइला गुछि जाबो नले जी प्रणाम। नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार। नमस्कार जी मोदी जी को, नमस्कार योगेश मिश्र जी को नमस्कार। प्रणाम भाई साहब। नमस्कार 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 मिस्टर जी, नमस्कार द्विवेदी जी, नमस्कार। नमस्कार 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 मिस्टर से नमस्कार। हाँ नमस्कार। बगैर से भाई अभी हो गया नहीं थी हो इसके बारे में हो गया। अभी एक मेरा एसपी विश्वा बीएम को है कि नहीं? हाँ? बघेल सर को नमस्कार, सर जुड़ गए हैं। सर अभी म्यूट हैं। सभी व्यूअर्स को नमस्कार जी। नमस्कार सर नमस्कार। गाड़ी कटवा दी। अरे यार नजर लगा ये तो सर नमस्कार, प्रणाम सर। उस दिन एक कार्यक्रम में भूषण पटवर्धन जी बड़े वो हो रहे थे, बोले ये दाढ़ी वाले बैठे ये कौन है? वो शायद बॉम्बे वाला कार्यक्रम था, वेबिनार, उसमें नहीं जो कार्यक्रम। जल्दी डिसीजन ले लिया आपने मुंडन कराने का दाढ़ी का? नहीं, वो हमारे पोते के रिक्वेस्ट पे। उसने कहा अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा भाई अब घर का सबसे सीनियर मेंबर जो है कह रहा है तो सही है। आज की तो न्यूज थी कि सत्येंद्र जैन जो है वो एडमिट हो गए। डिस्निया हुआ, क्या हुआ पता नहीं, अब नाटक है क्या है। पॉजिटिव है, हैं? पॉजिटिव है।
रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव? नहीं आ गई? अभी कंफर्म नहीं हुई, लेकिन सब बोल रहे पॉजिटिव। ये दिल्ली में बैठे ऑफिशियली डिक्लेयर किया है, लेकिन पॉजिटिव है वो। इन लोगों ने कोई तैयारी नहीं करी, लॉकडाउन का पीरियड था, दे शुड हैव प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड, लेकिन बस ये गरियाते रहे रूलिंग पार्टी को और कुछ काम इन्होंने किया नहीं, आम आदमी पार्टी वालों ने, इसलिए परेशान है। दिल्ली की स्थिति तो बहुत खराब है और ऑफिशियली आप एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड तो है ही। जब आपको 10-11 हजार रोज पेशेंट है। Secretary sir has joined us. कोटेचा जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, प्रणाम सर। नमस्कार कोटेजा जी, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम सर। जी जी नमस्कार। कैसे कुशल? बस बढ़िया सर। तब आप इसको शुरू करना चाहे तब आप शुरू। बस सर आपका आज्ञा सर, आपके इंतजार था सर, शुरू करें सर? जी प्लीज, श्योर। यस। ओम सर्वेशम स्वस्ति भवतु, सर्वेशम शांति भवतु, सर्वेशम पूर्णम भवतु, सर्वेशम मंगलम भवतु। ओम शांति शांति शांति। With this auspicious slogan, we would like to start today's interaction on the topic Challenges of COVID-19 in Northeast India, its management through Ayurveda intervention and future strategy. I, Dr. Shikha, on behalf of NEIAH, welcome our esteemed guest, Vaidya Rajesh Katocha sir, Honorable Secretary, Ministry of Ayush, Government of India, revered panelists, invited speakers, representatives from Vishwa-Ayurveda-Parishad, and those who are watching us live through YouTube page of NEIAH Shillong. Yes. At the very beginning, I would like to request. हेलो। स्वामी जी आप इसको म्यूट कर दीजिए अपना। At the very beginning, I would like to request our director, Professor P.K. Goswami sir, to kindly deliver the welcome address. Sir, please. I have a request for everybody who is not speaking. Please mute your video, mute your audio, so that there is no echo in our communication. So other than Dr. Goswami ji, please everybody should make their mic mute. Go ahead. Yes. Namaskar. Good afternoon to everyone, and warm greetings to all of you from NEIAH Shillong and Vishwa-Ayurveda-Parishad Northeastern regions. I am very much privileged to welcome all of you in today's webinar, which is hosted by Northeastern Institute of Ayurveda and Homeopathy Shillong in collaboration with Vishwa-Ayurveda-Parishad Northeastern regions. It is my proud privilege to welcome our esteemed Secretary to the Government of India, Ministry of Ayush, Padma Shri Vaidya Rajesh Kotecha ji, the dynamic and vibrant leader, under the guidance of whom the ministry is leading to a new horizon, creating an awareness over the global population to combat COVID-19 crisis through Ayush in general and particularly by Ayurvedic interventions. It is my proud privilege, and I am happy to extend my warm welcome to the esteemed Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Ayush, Sri Pramod Kumar Pathak ji, who always encourage and guide us to properly take the challenges of COVID, to take the different preparation ourselves in institutional level to take the challenge of COVID-19 pandemic in the region, as well as to support our institute. We are also extend my heartiest welcome to both the advisors of Ayurveda, Ministry of Ayush, Dr. D.C. Kotecha ji, Dr. Manoj Desri ji, to this webinar, as all the technical and groundwork are done by them for taking challenges of COVID-19 with their expertise knowledge of Ayurveda on behalf of the ministry. I also extend my warm welcome to Professor S.P. Mishra, former Vice Chancellor, Uttarakhand Ayurveda University and Samrakshak of Vishwa-Ayurveda-Parishad, Professor Baldev Dhiman ji, Honorable Vice Chancellor, Sri Krishna Ayurveda University,
Haryana. Professor K.S. Dhimanji, Director General, CCRS. Professor B.M. Gupta, National President of Vishwa-Ayurveda-Parishad. Professor Jogesh Chandra Mishraji, Organizing Secretary, Vishwa-Ayurveda-Parishad. Professor A.K. Bhargav, National Secretary, Vishwa-Ayurveda-Parishad. Vaidya Sembaditya Thakur, who is in charge of Vishwa-Ayurveda-Parishad for Northeastern regions. And Professor Mahesh Bass, who is from All India Institute of Ayurveda, New Delhi, and he is acting as a Vice President of Vishwa-Ayurveda-Parishad. He is actively cooperating with us to host these webinars. And I am great privilege and happy to welcome to today's webinar to our esteemed invited speakers. They are हमारा गुरुओं का गुरु है प्रोफेसर M.S. बाघेल जी, प्रोफेसर H.M. चंदुला जी. Both were very renowned faculty. They have been serving their distinguished career as a teacher in global level, as well as they have been contributed a lot to the academic and research based on Gujarat Ayurveda University Jamnagar, as well as I also extend my welcome to Professor B.K. Dwivedi from BHU and Professor K.K. Dwivedi, who is a member of the director of CCM as a professor in SS University, Varanasi. Along with these distinguished panels, good numbers of viewers are associated with me. I also extend my warm welcome to all the viewers and other office bearers of Vishwa-Ayurveda-Parishad from all parts of the country, especially the representative of the northeastern states, because some representative of Vishwa-Ayurveda-Parishad of northeastern region also joining us, and they will put forward their views later on. And along with this, I also extend my esteemed colleagues of NEIAH as well as different distinguished faculty members of Government Ayurvedic College, Guwahati. So after extending welcoming, I want to give certain light what are going on in northeastern regions, particularly in area of Vishwa-Ayurveda-Parishad as well as in the latest situation of COVID pandemic. Actually, activities of Vishwa-Ayurveda-Parishad in northeastern region is getting started from sometimes in 2017-18, and gradually it is able to get its footprints. I am very much hopeful that in the coming days the activities will be more and reach to the most of the states in ground level. You will be happy to learn that our institute NEIAH will cater the need of quality Ayurvedic graduate in the states in near future. By 2002, we are going to produce the first batch where a good number of students are representing this stage. In reality, Ayurveda was earlier not well known and was not taken seriously as a profession by the young generation, although each have a very good footprint in Assam as well as Arunachal Pradesh. But presently, due to active initiation and guidance and periodic monitoring by the Government of India, a good number of activities have been taken by these states where nature has abundantly given natural resources which rich flora and fauna, making the whole Northeast in one of the richest biohotspots of the world. The herbal drugs as suggested or actively used all over the country and all over the globe, and suggested as by the Ministry of Ayush Government of India, which are abundantly available in these regions with good quality. For example, Haridra, Ardak, Tulsi, Tejpatta, Dalchini, Maris, Ilasi, Pipali. These are easily available and easily accessible to every household in the regions. Apart from these, some other easily available drugs which can be used simultaneously like Basaka, Varanga, these are abundantly found in these vegetations. One of the important points is that a good number of traditional preparation are in practice in this region, as there are more than 250 to 300 tribes, sub-tribes, practicing their age-old tradition to counter diseases. Perhaps these are meticulously inclusion and assimilation of knowledge of Ayurveda during last thousands of years by different tribes and sub-tribes. Specifically coming to the COVID and COVID-19 pandemic in northeastern regions, it is observed that initially it is in a very less number of COVID-19 infected patients in the regions, and even 2 or 3 states have been initially declared to be COVID-free. But in latest situation,
the whole northeastern states is having a rise of COVID and infected people. And this is due to the return of the people from the road zone area like Maharashtra, Delhi, Surat, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, etc. So now the situation gradually become alarming. But when we have discussed these mortality rates, we have also certain positive signs we have also seen, because generally certain factors like low density population, less pollution, rich greenery and vegetations, traditional food habits, and high literacy rate definitely have play important role for minimize the COVID-19 patient in the regions, excluding the migrant people from the other parts. So, from the initial state, under the guidance of ministry, my institute has taken certain initiative to create awareness among the common people through different media, like addressing to the All India Radio, Doordarshan, and distributing certain pamphlets through our students, either in soft copy or hard copy, that what are the measures to be taken and what are the Ayurvedic intervention or homeopathic interventions may be helpful for promoting immunity against this and COVID-19 infections. So we are taking certain initiatives to combat these different stages of pandemic and COVID-19 in these regions. But I am going to submit certain data, because the entire Northeast region is having total populations of over 4.5 crores. And density of the population is 170 number per square kilometers. And total area is 2,62,179 kilometers. So in this big area of the less population, we have seen that till now on the data shows on 15/6, that is yesterday, the total number of 6,300 patients have been found positive. And out of these, around 2,500 get cured, and death is occurs only 10. 1 each in Meghalaya and Tripura, and 8 numbers in Assam. So you see that whatever the factors just I have mentioned, that this low density of population, less pollution, rich vegetation, traditional food habits, and maintenance of strict hygienic condition and cleanliness by the different tribes and sub-tribes in the regions, and high literacy rates. Probably these are the factors those helps the society to minimize the COVID-19 infection in the region. And moreover, as I mentioned, the food and drinks, these are actually composed of these traditional herbs and plants, which most commonly we use as our dietetic ingredients, as a spicy substance or green vegetables. So these are the certain given highlights among the different latest situation of COVID-19 pandemic in the northeast regions. And no doubt it is a very worried and alarming situation. The day by day, the migrated are returning back to their home. Each and every day, the number of positive cases are increasing. But all the state government are very actively taking care of these cases and take the challenge very positively. And I hope in near future we are going to have a very good and fruitful results. Once again, I extend my heartiest welcome all of you to this webinar, and I hope these deliberations definitely extend certain positive support, particularly these regions, because it is very much essential to propagate the message of Ayurveda that in coming days, common population should definitely taking the help of Ayurveda in daily to daily life to enjoy a disease-free life and beat corona viruses. Thank you very much. Thank you so much, sir. I would now like to request our esteemed sir, Vaidya Rajesh Katocha sir, a name which is synonymous with dynamism and positivity, and it's a great privilege for us to have amidst us, sir, today. I would like to request sir to kindly bless us with his words. Sir, please.
आदरणीय प्रोफेसर बघेल जी, प्रोफेसर चंडोला जी, आप सबको जानकारी दे दूं कि मैं इनके पास पढ़ा हूँ। ये दोनों आप मेरे गुरु हैं। दोनों गुरुजनों के उपस्थिति में बोलने का मौका मिल रहा है, एक प्रकार से सद्भाग्य है। श्री पाठक जी, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, डॉक्टर योगेश मिश्र जी, अपने डॉक्टर मिश्र जी एंड बलदेव जी, और सभी एस्टीम्ड गेस्ट, एस्टीम्ड स्पीकर्स एंड एक्सपर्ट्स हु इज प्रेजेंट हियर, विश्व आयुर्वेद परिषद के बाकी सभी पदाधिकारी, फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स ऑफ NEIAH, प्रोफेसर गोस्वामी डायरेक्टर, आप सबका नमस्कार। अपने दिन के लिए ये जो इवेंट है, ये एक प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव में मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। अपने आयुष के वर्कफोर्स को सेंसिटाइज करने के लिए इसका बहुत महत्व है। और एम आई ऑडिबल? जरा मुझे बताइए, एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you're audible. Yes, sir, you're audible, sir. मेरा ये रिक्वेस्ट है कि बाकी सब लोग एक बार अपना माइक देख लें, एक बार उसको म्यूट कर दे तो सो दैट इको ना आए। इको आने से फिर Sir, actually I muted everyone. Okay. I understood. So होस्ट को भी ये ध्यान रखें कि आप थोड़ा जो बोल रहे हो उनको आप अनम्यूट करें, बाकी सबको म्यूट करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से इवेंट आप उसको कर लेंगे। Yes, sir. हम सब जानते हैं कि कोविड-19 को डील करने के लिए आयुष सेक्टर ने, आयुष ने बहुत काम किया है पूरे देश में। अपने आयुष मंत्रालय के सभी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च काउंसिल्स हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त योगदान दिया है अलग अलग फॉर्म में। एक तो ये कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करके उनको कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने का मौका मिला है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी इस प्रकार से बहुत सारे आयुष वर्कफोर्स को कोरोना के सामने लड़ने के लिए मैदान में, जंग में वो लोग उपस्थित हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को 2 लाख से ज़्यादा लोगों को, चिकित्सकों को ट्रेनिंग दिया गया है कोरोना वॉरियर्स की, और 50,000 से ज़्यादा पैरामेडिकल आयुष के वर्कफोर्स है जो गवर्नमेंट सेक्टर में, उनको भी उसकी ट्रेनिंग दिया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि देश भर में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है जो स्टैंड अलोन आयुष के हॉस्पिटल, स्टैंड अलोन कोविड केयर सेंटर के रूप में कन्वर्ट किए गए हैं। आज ही से अपना जो दिल्ली में ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, उसमें डेडिकेटेड 50 कोविड के बेड का चिकित्सा वहाँ शुरू हो गया, कोविड केयर सेंटर वहाँ शुरू हो गया। दिल्ली में ही चौधरी ब्रह्म प्रकाश है या तिबिया कॉलेज है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उत्तर प्रदेश में नेमिनाथ आयुर्वेद होम्योपैथिक कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेजेस के हॉस्पिटल को कोविड सेंटर में कन्वर्ट किया जा रहा है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हॉस्पिटल्स में आयुष इंटरवेंशन के लिए निश्चित रूप से हम लोगों को एक आयुष की विधाओं को प्रमाणित करने का मौका भी मिल रहा है। तो अभी तक हम ये सुनते आ रहे थे कि हम स्टैंडर्ड केयर के ऊपर एड ऑन थेरेपी कर रहे हैं, उसके लिए रिसर्च कर रहे हैं, बट दीज हॉस्पिटल्स आर एक्चुअली डूइंग स्टैंड अलोन आयुष इंटरवेंशन ऑन कोविड पेशेंट्स एंड प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ leads and lot of primary evidences of effect of आयुष इंटरवेंशन। हम सबको पता है कि 3 एरिया में आयुष इंटरवेंशन हम उसके ऊपर शोध का कार्य कर रहे हैं। एक तो यह है कि आयुष CSR मिलकर के अश्वगंधा, पीपली, यष्टि मधु और आयुष 64, इसके लिए देश भर में लगभग 18 स्थानों पर उसके स्टडीज चल रहे हैं। अश्वगंधा का जो स्टडी है वो प्रोफाइलेक्सिस ऑफ अश्वगंधा एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ उसका कंपेरेटिव स्टडी चल रहा है, और बाकी तीनों के एड ऑन के रूप में स्टडीज चल रहे हैं। इट इज ए रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, वेरी स्ट्रिक्ट ट्रायल्स चल रहे हैं, उसको शुरू हो गया। ये एक एरिया है जिसमें हम भारत सरकार का आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, सब तीनों मंत्रालय मिलकर के ये काम कर रहे हैं। दूसरा, बहुत लार्ज स्केल पर प्रोफाइलेक्सिस स्टडीज हो रहे हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हो रहे हैं, इसमें अपने NEIAH के माध्यम से भी हो रहे हैं। मेरे को जानकारी है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ने एक प्रस्ताव रखा है EMR के लिए, और आज अभी इस कार्यक्रम के तुरंत बाद मेरे को उसकी
कमेटी को चेयर करना है। मैंने उस प्रस्ताव को भी देख लिया है और मुझे पक्का विश्वास है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो जाएगा। तो एक प्रकार से ये लार्ज स्केल प्रोफाइलिक्स स्टडीज जो है वो कंटेनमेंट जोन्स में या हाई रिस्क पॉपुलेशन के लिए अलग अलग इंटरवेंशन आयुष का, इसमें आयुर्वेद के भी है, होम्योपैथी भी है, यूनानी, सिद्धा, सब इंटरवेंशन के ऊपर स्टडीज हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि योग और नेचुरोपैथी के ऊपर भी बहुत सारे स्टडीज इनिशिएट हो रहे हैं, खास करके योग, कोविड पेशेंट्स पर योग का प्रभाव, उसको मल्टी सेंटर ट्रायल भी उसको भी शुरू हो रहा है। तो ये दूसरा पक्ष हो गया। तीसरा पक्ष हो गया कि देश भर में आयुष इंटरवेंशन के लिए इम्यूनिटी प्रमोटर गाइडलाइन से लेकर के बहुत सारी गाइडलाइंस जारी हुई है। प्रैक्टिशनर्स की गाइडलाइन भी अभी भारत सरकार ने इसको जारी करी है, प्रैक्टिशनर्स गाइडलाइन फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड, सभी आयुर्वेद के लेकर के सभी विधाओं की भी जारी हुई है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, उस पर मैं विशेष रूप से आपको सबको मैं ध्यान देने के लिए आग्रह करता हूँ कि ये आयुष संजीवनी ऐप है, अभी आज तक में 5 लाख के आसपास डाउनलोड हुए हैं उसके। और आयुष संजीवनी ऐप है, उसका हेतु क्या है, इट इज काइंड ऑफ ए रिट्रोस्पेक्टिव पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी, जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि लार्ज स्केल पॉपुलेशन में इसका हमने जो एडवाइजरी जारी करी उसका क्या प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट असेसमेंट भी कह सकते हैं उसको। तो मेरा ये सबसे निवेदन है आपके माध्यम से, विश्व आयुर्वेद परिषद के लोग भी, हमें विश्व आयुर्वेद परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी पिछले दिनों बात करी थी, और देश भर में विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता है उनसे भी मैंने बात करी थी। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट के माध्यम से मैं नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट के छात्रों और फैकल्टी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप जरा ये आयुष संजीवनी ऐप को खुद को डाउनलोड तो करिए ही, और आपके प्रभाव में, आपके संपर्क में जो भी है उसको आप प्रेरित करिए कि वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, हमारे पास जो अभी डाटा है उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के डाउनलोड्स बहुत कम है, 4 लाख 3 लाख से ज्यादा डाउनलोड हुआ, उसमें से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बहुत कम डाउनलोड हुआ है। इसमें आयुष संजीवनी ऐप में उसके दो पहलू है। एक तो यह है कि इंडिविजुअल के रूप में वन कैन सबमिट देयर ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस अबाउट आयुष, और दूसरा चिकित्सक का इंटरफेस है कि चिकित्सक इसमें अपने पेशेंट के डाटा डाल सकते हैं या अपने परिचित का, वॉलंटियर्स के डाटा डाल सकते हैं। तो डाउनलोड तो 4 लाख हुए हैं, वो iOS प्लेटफॉर्म भी है और उस पर भी अवेलेबल है एंड्रॉइड पर, लेकिन हमारे पास जो डाटा है लगभग 20 लाख लोगों की डाटा है, और कुछ डाटा सेट हमारा जो गोल है वो 50 लाख डाटा सेट का है। तो मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप एक बार आयुष संजीवनी, इट इज नॉट संजीवनी, आयुष संजीवनी ऐप को हम लोगों को अपने डाउनलोड करके उसको डाटा सेट के लिए आप हेल्प करिए, ऐसी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। मैं एक इम्पोर्टेंट ये बात कहना चाहता हूँ कि ये सब क्लिनिकल स्टडीज के सिवाय, ऑब्जर्वेशन स्टडीज के सिवाय या पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज के सिवाय, अभी डीबीटी के साथ मिलकर के हमने इसी सप्ताह से इन्हीं सब औषधियों का प्री क्लिनिकल या इम्यूनोमोड्यूलेटरी या एंटीवायरल ऑन कोविड-19 ये सब स्टडीज भी शुरू किए हैं। हेतु ये है कि 3 महीने के अंदर अंदर ये क्लिनिकल एविडेंसेस को हम कोरोबोरेट करके इसके मैकेनिक्स तक भी पहुंच जाए और मैकेनिक्स को भी हम एक बार देख लें। तो कुल मिला करके मल्टीपल डायरेक्शन के स्टडीज चल रहे हैं। तो ये तो हो गई रिसर्च की बात, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटीग्रेटिव मॉडल के रूप में आयुष इंटरवेंशन जो है वो लार्ज स्केल स्टैंडर्ड केयर के अंदर इंक्लूड हो। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की जहाँ तक बात है, जैसे डॉक्टर गोस्वामी जी ने बताया कि वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी इज एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द नेशन इज नॉट मच, 170 प्रति स्क्वायर किलोमीटर इज नथिंग। तो वहाँ पर उसके बाद भी इतने सारे केस हैं, आप देखिए जब देश के बाकी जो हॉटस्पॉट्स के साथ कंपेयर करें तो इट इज नॉट मच, उसमें इतना ज़्यादा नहीं है। मेरा ये निवेदन है आपको, बिकॉज यू आर ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कि आप इसको एक मिशन मोड में यदि ये लेते हैं और आयुष इंटरवेंशन के बारे में अच्छे से प्रचार प्रसार करते हैं और उसको एक प्रकार से मिशन या जन जागृति के रूप में लेके जाते हैं, तो वहाँ जो थोड़े बहुत भी केस जो है उसमें से 50% आपका रिकवरी रेट भी है, तो वो जल्दी से आप इसमें से बाहर आने की संभावना है। आप सबको पता है, हम सबको पता है कि लॉकडाउन से पहले कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो फ्री हो गए थे, दे वर फ्री फ्रॉम एनी इंसिडेंस, लेकिन बाद में जब ये हमने जो माइग्रेशन पॉपुलेशन का हुआ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसके बाद फिर कुछ केसेस आए हैं। तो कुल मिलाकर के ये हम सब की लड़ाई है जो विजिबल
दुश्मन नहीं उसके सामने। और इसमें आप ऐसे देखिए कि अलग अलग रोगों के मैनेजमेंट में देर आर लॉट ऑफ एविडेंसेस, लॉट ऑफ स्टैंडर्ड केयर डिजाइन्स एंड मॉड्यूल्स एंड मेडिसिन अवेलेबल। इसमें आयुष और कन्वेंशनल मेडिसिन बोथ आर एट द सेम प्लेटफॉर्म, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कौन सी चीज काम करेगी, तो हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। तो हम इसको, ऑफ कोर्स दिस इज ए क्राइसिस, लेकिन हम लोग को उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए हमारे सेक्टर को, कि हमें एक प्रकार से अपने ताकत को प्रूव करने का मौका मिला है। इस प्रकार के हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार के वायरस जनित बीमारियों में जो देसी दवाइयां हैं, आयुष की दवाइयां हैं, आयुर्वेद की दवाइयां, वो ज्यादा काम करती है, हम सब जानते हैं उसको। बट फॉर अस इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव दैट। इसलिए मैं आपकी सबकी हेल्प चाहता हूँ कि आप सबके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को इसको चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत तो जब संभव है कि जब हमारे विज्ञान, जो भारतीय विज्ञान है, उसको भी हम उस ऊंचाई तक लेके जाए। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने मन की बात, पिछली 2 बार की मन की बात में आयुष का उल्लेख किया है। इससे पहले वाले जब 26 अप्रैल को उन्होंने जब मन की बात में बात करी, तो प्रोफेसर विज कुमार द्विवेदी जी आप अपना म्यूट करिए, अपना माइक म्यूट कर दीजिए। अनु वैष्णव जी आप भी म्यूट कर दीजिए, बिकॉज द पीपल हु इज कमिंग, इनके माइक म्यूट नहीं होने से दिक्कत होती है। मैं ये आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आपने सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि मन की बात में कि हमारे विज्ञान जो है, उस विज्ञान के पास बहुत ताकत है, भारतीय विज्ञान है, और हम इसको बहुत, उससे बहुत अपेक्षाएं भी करते हैं और उनके पास बहुत पोटेंशियल है। उन्होंने कहा कि लेकिन हमारे देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो सो कॉल्ड एलाइट लोग, पढ़े लिखे लोग, जिनको इस पर विश्वास नहीं है। तो जो उनको समझ में आए उस भाषा में हमें इनको एविडेंस जनरेट करके देना पड़ेगा। तो एंड देन उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि मैं युवाओं को आह्वान करता हूं कि इस काम में जुट जाएं। तो युवाओं को आह्वान मतलब हमारे जो कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट में छात्र छात्राएं हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हम सब लोग अपने आप को उस स्तर तक तैयार करें और डेडिकेट करें इस विज्ञान के आगे, उसको समय के अनुसार उसको प्रस्तावित करने में। हमारे पास ये आर्गुमेंट्स आते हैं, हमेशा आते हैं कि वी डोंट नीड दैट, हमारे शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है, हम तो 5000 साल से या उससे भी ज्यादा वर्षों से प्रचलित है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये यदि इसमें कुछ कमी होती तो टिकता ही नहीं। ये विज्ञान, इतनी सारी बाधाएं आई, 1000 साल की गुलामी आई, तब भी ये टिक गया, इसका मतलब देयर इज समथिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन उसके बाद भी हमें यदि दुनिया भर में इसको फैलाना है, जैसे योग, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि जैसे योग पूरी दुनिया में फैल गया, वैसे अब आयुर्वेद को भी पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए। उसके लिए आप ये करें, ऐसा उन्होंने एक मैंडेट दिया। एक प्रकार से हम सबके लिए एक गोल रखा कि हमें यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है कि हम इसको प्रचलित विज्ञान, बेसिक साइंसेस के बेस पर हम लोग उसको प्रमाणित करें, फिर से प्रमाणित करें, और जो लोग समझ नए जनरेशन के वैज्ञानिक लोग समझे उस भाषा में उनको बताएं। उसके लिए ऐसे वैज्ञानिक को पैदा करने के लिए हम लोगों को एक चीज करनी पड़ेगी, वो है हमें अपने कुएं में से बाहर निकलना पड़ेगा। हम जनरली आयुर्वेद वाले हम हमारे में ही मस्त होते हैं, आपस में ही बात करते हैं, हम हमारी कम्युनिटी से बाहर नहीं जाते, और उसके कारण हम लोगों का एक्सपोजर नहीं होता। हमारा एजुकेशन भी उस तरीके से एक प्रकार से कुएं का मेढक जैसा है कि हमारे जो छात्र हैं उनको भी उतना एक्सपोजर नहीं मिलता। तो मेरा ये निवेदन है, खास करके ये आह्वान है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट का, नया इंस्टीट्यूट है, नया इंस्टीट्यूट को एक अपॉर्चुनिटी होती है टू एस्टैब्लिश देयर नेम एंड फेम इन नो टाइम। पुराने इंस्टीट्यूट की कोई इमेज होती है, उसको ओवरटर्न करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन नया जो कंप्यूटर नया इंस्टीट्यूट है, अभी तो आपका एक पेज भी बाहर नहीं आया, आप चाहें तो अपने आप को वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छे शिक्षा संस्थान ही श्रेष्ठ ह्यूमन रिसोर्स दे सकते हैं, इसलिए उस विषय पर हमारे ध्यान जाना चाहिए। मैं मेरे मंत्रालय में मेरे जो सहयोगी साथी हैं उनका मैं नाम लेना भूल गया, प्रोफेसर अपने दिनेश कटोच जी हैं एडवाइजर, मनोज मिस्त्री जी हैं, अपने धीमान जी हैं,
सब यहाँ उपस्थित है। तो एक प्रकार से पूरा क्रीम, आयुर्वेद का पूरा क्रीम यहाँ पर उपस्थित है और जिनके ऊपर आयुर्वेद के भविष्य का भार भी है। तो मैं आप सबका इस कार्यक्रम के माध्यम से आह्वान करता हूँ, वी हैव टू डिलीवर, और उसके लिए हम जो हमारी समझ में आए, जिस रोल में हम हैं उस रोल में अपने आप को समर्पित करें और लग जाए काम में। यही एक तरीका है। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट के लिए विशेष बात, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर इतना जबरदस्त ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेस है, बिकॉज आवर कंट्री इज बिग इन बायोडाइवर्सिटी। बहुत सारी औषधियाँ वहाँ सहज उपलब्ध होती है। तो नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं जब गया था वहाँ तो मैं एक बात से मुझे बहुत प्रभावित हुआ कि उनके पास फार्मेसी का अलग से कोई बिल्डिंग न होने पर भी उन्होंने एक कमरे में कुछ औषधि का उत्पादन शुरू कर दिया था। तो आपके पास इतना अच्छा रिसोर्स है, तो डायरेक्टर साहब आप फार्मेसी को बहुत अच्छे से यदि वहाँ अच्छे स्तर से स्थापित करते हैं तो औषधि की गुणवत्ता ठीक होने से आपके पास पेशेंट का नंबर की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा होंगे तो अपने बच्चों को ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, ज़्यादा पेशेंट देखने को मिलते हैं, वो और अच्छे चिकित्सक बनते हैं और अच्छे वैज्ञानिक बनते हैं। इसलिए आप अपना रसशाला को भी बहुत अच्छे से इसको वहाँ लगाएं। इसलिए जो भारत सरकार की मदद करी बताइए, एंड विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड एज मच एज पॉसिबल। मुझे आपने शांति से सुना, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। और अगेन मैं मेरे दोनों गुरु यहाँ उपस्थित हैं, प्रोफेसर चंडोला जी और प्रोफेसर बघेल जी, उनको प्रणाम करते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your ever-inspiring words and guiding us in the right direction. Hopefully, we all at NEIAH will be able to follow your path and work in the right direction. Thank you so much, sir. Pranam, sir. So, I would now like to request Professor Dr. Baldev Kumar Dhiman, sir, Vice Chancellor, Sri Krishna Ayush University, Kurukshetra, Haryana, to kindly deliver his words. Sir, please. परम आदरणीय माननीय आयुष सेक्रेटरी श्रीमान कुटेजा जी और आयुर्वेद के पूरे दिग्गज सभी नेतृत्व और जामनगर से मेरे दो गुरुजी, उनको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात आप सबके समक्ष रखता हूं। हरियाणा ने 6 अप्रैल को चिकित्सा के क्षेत्र में एंट्री की थी। शुरू में हमने एड ऑन ट्रीटमेंट के नाते कि एलोपैथी दवा का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था, उस प्रोटोकॉल के साथ साथ आयुर्वेद की दवा भी दी जाए, इस प्रकार का एक प्रस्ताव हरियाणा गवर्नमेंट को दिया था। बाद में वो CCRS से भी उसको वेट किया गया, वहां से वो समीक्षा होकर के आया और हरियाणा का जो PG संस्थान है एलोपैथी का रोहतक में, तो वहां से भी वहां की जो एथिकल कमेटी थी उसने भी इसको असेस किया और उन्होंने भी हरी झंडी उसको दी कि ये काम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से 6 अप्रैल को जो 4 जिले प्रभावित थे ज्यादा हरियाणा के, ऐसे फरीदाबाद, नूहू, पलवल और गुड़गांव, तो यहाँ पर एलोपैथी दवा के साथ साथ आयुर्वेद की भी दवा दी गई। और एक दूसरा ग्रुप हमने जो रखा था उसमें केवल जो कन्वेंशनल सिस्टम मेडिसिन से जो एक प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दी जा रही थी, तो एक दूसरा ग्रुप वो था। तो इसमें काफी अच्छे परिणाम रहे। पहले भी मैंने बताया कि पहला जो टेस्ट 5वें दिन किया गया उसमें सभी पेशेंट हमारे नेगेटिव थे। ऐसे ही फिर एक दिन छोड़ के दूसरा टेस्ट जब किया उसमें भी नेगेटिव थे। तो ये रुझान उन 4 जिलों में सभी पेशेंट्स के प्रति रहा। फिर थोड़े दिन बाद एक खेतानाथ आयुर्वेदिक कॉलेज है नारनौल में, उसको कोविड हॉस्पिटल बनाया गया, तो उसमें केवल आयुर्वेदिक दवा का प्रोटोकॉल हमने वहां पे दिया। तो उसमें भी यही रुझान रहा कि पहले 5 दिन में, यानी जो टेस्ट हुआ पहला, उसमें नेगेटिव मिले पेशेंट, तो लगभग 80 के आसपास वहां पे पेशेंट हुए और टोटल मिला के अब तक 400 के आसपास पेशेंट हुए। सभी का रुझान इसी प्रकार का था। इस बीच में कुछ पेशेंट्स को घर पे क्वारंटाइन रहने के लिए कहा गया, तो वहां पे भी 200 के आसपास पेशेंट ऐसे हो गए हमारे जिनको घर पे दवाई दी गई।
और उसमें भी हम ये महासुदर्शन घनवटी और जो षडंग पानीय है वो दिया गया। तो ये एक रुझान मैंने आपके सामने रखा। फिर इसमें बात ये आ रही थी सभी जगह से कि ये जो 5वें दिन नेगेटिव हो रहे हैं ये तो सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है, और या फिर एलोपैथी से भी 5 या 7 दिन में आ रहे हैं। तो हमने उनको विनम्रता पूर्वक एक ही बात कही कि ये जो 5वें और 7वें दिन नेगेटिव हुए पेशेंट, तो मतलब नो डाउट कि वो जो कन्वेंशनल सिस्टम मेडिसिन से भी वो 5वें 7वें दिन हो रहे थे, लेकिन उसमें 10वें 14वें और 20वें दिन तक भी वो पेशेंट रहे जिनको आयुर्वेद की दवा नहीं गई। तो इसलिए स्पष्ट रूप से जिन पेशेंट्स को आयुर्वेदिक दवा दी गई थी वो पहले ही टेस्ट में नेगेटिव हुए। तो ये एक बात सामने आई। फिर बात आती है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की, या कहीं पे लैब में इसको सिद्ध किया गया कि ये एंटीवायरल है ड्रग। तो अभी हमारा एक MOU हिसार में एक संस्था है जो कोविड-19 पे ही काम कर रही है। इस पे वो बहुत सारी हर्बल ड्रग्स का उन्होंने वहां पे इसके ऊपर काम शुरू कर रखा है। तो हमने भी उनके साथ मिलकर एक MOU साइन किया, और ये जो महासुदर्शन घनवटी या षडंग पानीय है और एक हमने संशमनी वटी उनको दी, क्या इसका भी आप इस पे इफेक्ट देख के और हमें बताइए आप। तो वहां एक काम ये हमारा शुरू हुआ है। तो मुझे केंद्रीय नेतृत्व से यही निवेदन करना था कि जैसा इसको हम अवसर के रूप में देख रहे हैं, तो पूरे देश के लिए एक ही प्रकार का प्रोटोकॉल बन जाए और सभी स्टेट में उसको फॉलो करें। और इस पे फिर ये जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन करके, और ये जो रिसर्च की बात अभी माननीय कुटेजा जी कर रहे थे, तो इसका भी एक रिसर्च प्रोटोकॉल बनके और विधिवत रूप से पूरे देश में एक जैसा लागू हो, तो इस बात की आवश्यकता है। और थोड़ा सा इशारा मैंने कल परसों की बात में भी अपने किया था कि ये जो हम एक ड्रग पे उसके एल्कलॉइड को लेकर के जो काम कर रहे हैं अभी कि ये एंटीवायरल है, इस कोविड-19 में काम करेगा, तो क्या इसको आयुर्वेद के लोगों को यूज करने की बाद में परमिशन मिलेगी? क्या ये अध्याय आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ेगा या फिर से ये एलोपैथी के क्षेत्र में जुड़ने जा रहा है एक अध्याय? तो यहाँ कहीं अपने को केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो रिसर्च है ये आयुर्वेद के पैरामीटर पे हो या फिर मॉडर्न पैरामीटर पे भी हो, तो फिर उसको हम पेटेंट करवाएं और हमारे लोग इसको यूज कर पाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था इसको देखना पड़ेगा। तो इस सब बात को रखते हुए मैं फिर से गुरुजनों को प्रणाम करते और सारे केंद्रीय नेतृत्व को इनको नमस्कार करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय आयुर्वेद, जय भारत। मैं 2 मिनट के लिए बलदेव जी ने जो कहा उसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, यदि आप संचालक महोदय की अनुमति हो तो। यस सर, जरूर सर। बलदेव जी, इसमें मैं एक जानकारी सबके ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि आयुष मंत्रालय ने एक इंटरडिसिप्लिनरी टास्क फोर्स बनाया था, जिसमें यहाँ भी उपस्थित बहुत सारे लोग, बहुत सारे विशेषज्ञ भी उसमें सम्मिलित थे, और सभी प्रकार के स्टडीज के लिए जेनेरिक प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर रखे गए हैं, और मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर कॉमन ट्रीटमेंट गाइडलाइंस भी है, गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिशनर्स भी है, और बहुत सारे अलग अलग डिजाइन के प्रोटोकॉल, जेनेरिक प्रोटोकॉल्स भी वहाँ पर है, उपलब्ध है। एक डैशबोर्ड है, उस पर भी रखे गए हैं। और अभी CCRAS के सहायता से अपना जो आयुष रिसर्च पोर्टल है, उसमें साथ में एक डाटा रिपोजिटरी का भी एक व्यवस्था, जिसको हम डैशबोर्ड के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है, वो भी रखा हुआ है। and then we have also formally written to all universities, जिसमें बलदेव जी की यूनिवर्सिटी को भी हमने लिखा था और सभी यूनिवर्सिटीज को लिखा है, सभी स्टेट्स को भी लिखा है कि आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं वो करना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं कोई टेक्निकल मार्गदर्शन चाहिए या ऐसा कुछ हो तो आप ये प्रोटोकॉल्स का प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ आवश्यकता हो तो मिनिस्ट्री के अंदर हमने एक यूनिट बनाया है जो इन सब प्रकार की रिसर्च एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करे। तो जहाँ कहीं इस प्रकार की आवश्यकता हो उसको करना चाहिए। और ये सब आयुष बोर्ड के जो शोध है उसको आप निश्चिंत रहिए बलदेव जी कि ये हमारे चिकित्सकों को कोई अधिकार छीनेगा नहीं, उसको मैं सुनिश्चित करूंगा। लेकिन मेरा ये आई वांट टू रीइटरेट कि हम बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग मिल करके इसी को बड़ा बना सकते हैं। जैसे
मैं उदाहरण देता हूँ कि मैंने अभिमन्यु जी से बात करी थी, तो अभिमन्यु जी वहाँ राजस्थान में जो जोधपुर में यूनिवर्सिटी आयुर्वेद की, तो उन्होंने दे हैव ए वेरी गुड कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने जो जेनेरिक प्रोटोकॉल हमने बनाया और जो औषधि सजेस्ट करी उस पर उन्होंने काम किया, एंड देन इट एडेड द वैल्यू टू द लार्जर स्टडीज। ऐसे कृष्णा यूनिवर्सिटी के पास ये चीज मिसिंग है कि आपके पास से हमें कुछ सुनने को मिलता नहीं है, आप एकला चालो रे वाली चीजों में चलते हैं, सो दैट वी आल्सो डोंट हैव अटेंशन टू दैट। एक बार जरा आप इसको रिट्रोस्पेक्शन करिए और बलदेव जी खास करके आपकी टीम को बताइए कि वो थोड़ा भारत सरकार के एफर्ट्स के साथ अलाइनमेंट करें ताकि हम और अच्छे से इस सब काम को कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बलदेव सर, राजेश सर, थैंक यू सो मच सर। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट Dr. D.C. Katot sir, Advisor, Ministry of Ayush, to kindly share a few words with us. Sir, please. Thank you. Honorable Secretary, Ministry of Ayush, Vaidya Rajesh Kotecha ji, and the invited speakers for this webinar, Dr. Baghel, Dr. Chandora ji, Dr. V.K. Dwivedi, Dr. V.P. Sharma, Dr. K.K. Dwivedi, my colleagues from the Ministry and from the Research Council, and the Director, Northeastern Institute of Ayurveda and Homeopathy, Dr. Goswami, and all the participants here. First of all, I must congratulate the Director, Northeastern Institute of Ayurveda and Homeopathy, Dr. Goswami, for organizing this webinar. I think the Northeastern region, it is, I think it is different from the other parts of the country. And fortunately, the incidence of this COVID cases, that is very, very less in comparison to other parts of the country. As per, I think the latest report is that around 5,500 cases are there, COVID cases are there. And 75% of those cases, they are in Assam only, in the northeastern region. And if you see the Meghalaya, I think Meghalaya is the least affected. I think only in the month of April or in the mid, there was one person, I think that was the index patient. And from that index patient, there were 13 cases which emerged. One important thing in Meghalaya is that the health system, health institutions, they are very, very good. 44 institutions in the state of Meghalaya, where our this Northeastern Institute of Ayurveda and Homeopathy is located. So in this state, 44 hospitals, they are catering to the needs of the COVID-19 patients. And out of 44, 6 hospitals, they are at tertiary care, where this COVID-19 patients can be. And the nearest institute to this Northeastern Institute of Ayurveda and Homeopathy is Nigrims. So I would suggest and I would recommend that some studies related to Ayurveda medicines as well as this homeopathic medicines which are being given to the patients from the OPD and from the IPD of this Northeastern Institute of Ayurveda and Homeopathy Hospital. I think that would be very, very encouraging, not only for the system, but also to the Ministry of Ayush, because we are promoting, we are encouraging scientific studies for Ayurveda interventions, for yoga intervention, and other Ayush interventions. Now, if you see the Northeast, the geoclimatic conditions or the environmental conditions of the Northeast, no, I think the overall conditions are temperate conditions. It is not very hot there and not very humid, only in the Assam part. So the Ayurveda intervention, particularly which has been advocated in our advisories, like this Sudarshan Ganpati or even the Ayush Kwath. No, in the Ayush Kwath, if you see all the ingredients, they are hot by nature. But Ayush Kwath, I think at the household level, this needs to be promoted. And so the prophylactic studies related to Ayush Kwath or even the clinical studies can be done in collaboration with the institutions where the COVID-19 patients are admitted. So with these words, I would just wish that if some scientific studies, otherwise, if you see the immunity index of the Northeastern people, I think that is very good, very, very good. Latest, there is a report that why the incidence of these people, because Northeastern people, they are working in different states.
I think every state from the northeastern region, every state has many people outside the region. And they are returning to the state, but even then the incidence of this COVID-19, that is very, very less in and it is reported that the strong immunity, the immunity index of these people, that may be the reason that why they are fighting this condition in a very good way. So whatever is happening now, the emergence of this COVID-19, I think it is also increasing day by day in northeastern region. But I think the least affected is Meghalaya. Mainly Assam, Tripura, and this Manipur, they are more affected. My suggestion, again, my suggestion or my advice to the director of Northeast Institute of Ayurveda and Homeopathy, that if they can conduct some study, particularly in collaboration with the Northeastern this NIGRIMS or some other institute, some hospital, particularly with regard to this Ayush Kwath, which is made up of 4 ingredients: tulsi, dalchini, shunthi, and kali mirch. And I think all the 4 ingredients, these are the best available in northeastern region. The organic kind of raw material, you can get it. So my suggestion is this, that okay. And with these words, I close my talk, and I wish you all the best for this. Thank you. Sir, so Dinesh sir. Yes. Yes, sir, namaskar. Namaskar. I was with contact you earlier also. Actually, in my hospital right now, OPD, IPD service is closed because my hospital is taken up by district administration as a quarantine center. So in certain areas, we have already taken up this prophylactic study by both Ayurvedic and Homeopathic intervention. But interesting question, those who are the designated center for COVID-19 or in quarantine center, they are difficult. Because they are not normally allowed us to... Hello, sir, you are listening me? You are getting me? I'm listening. Yes, sir. So we are getting difficulties because they are not allowing us to distribute our medicines, because with a protocol of 3 medicines, one is nausea, Anutoil, that means another is Sangshamonibati for promoting immunity, and one Kara, Ayush Kara. So all drugs we have been collected from IMPCL, so there is no question of quality. And I also write several times to the government of Assam. I have visited 2 times to different officers, but still now we are not getting. Because if we are get approval from the government of Assam and Meghalaya, then it will be very easy for us. At least we can cover 5,000 to 6,000 patients. Because by medicine, by workforce, we are ready. But question is that when we are visiting the even quarantine center, गोस्वामी जी, आपने कभी भारत सरकार को लिखा है? आप लिखिए, आप इसके बारे में लिखिए ना. We will write down to the state authorities. आज बता रहे हैं, आपने कभी कहा नहीं हमें. You have never said to us. आप हमें कहते तो हम सरकारों से बात करते कि आप इसको तुरंत करवाइए. You are dealing by yourself. आप खुद ही तलवार लेकर के झूठे हुए हैं. But you have never involved us. Sir, आपने कभी लिखा है क्या भारत सरकार को ये प्रॉब्लम के बारे में? 2 days back I have discussed with Manoj sir and I have written the letter. आप एक चिट्ठी आज ही लिखिए and then we'll resolve it. आज ही एक चिट्ठी लिखिए इस कार्यक्रम के बाद, send direct to write to Secretary Ayush and then we'll resolve it. हम स्टेट गवर्नमेंट से बात करते हैं आपके बिहाफ में. ठीक है सर, ठीक है सर. Sir, even we have this central institutions, sir, from the Ministry of Health and Family Welfare, NIGRIMS. So there also it can be done. This. We have written to them, but they are seems to be reluctant. Goswami sir, I have a reservation about that statement also, because all over the country, the other institutes of government of India are helping us, and they are on board. And then why in Meghalaya it is not happening? There must be some problem. हम लोगों को जितना एग्रेशन चाहिए उतना एग्रेशन शायद नहीं है वहाँ, तो हम इस पर काम करना चाहिए. All over the country, everybody is on board. Why not in Meghalaya? हमें तो आज पता पड़ रहा है, बता रहे हो तो पता चल रहा है, बाकी मेरे को तो पता नहीं है. I am not aware. So आप थोड़ा सा देखिए उसको. We have to, all of us should work in mission mode. और हम मिशन मोड में काम करना चाहते हैं तो सब हो जाता है. जहाँ बाधा है आप मुझे हमें बताएं, हम आपके साथ है ना. बिल्कुल विल वर्क विथ यू. गोस्वामी जी, आप जो है अपना कंसेप्ट प्रपोजल जो है वो भेजिए जरा, आयुष को भेजिए जरा, हम करते हैं.
ठीक है। Thank you so much, Katosh sir. Now, I would like to request Professor Vaidya K.S. Dhiman sir, Director General CCRAS, to kindly share his words of wisdom with us. Thank you. First of all, thank you very much, respected Secretary Ayush and other colleagues from the Ministry of Ayush and the Director of the Northeastern Institute of Ayurveda and Homeopathy. Sir, kindly start your video, sir. You're not visible, sir. Okay, low. Yes, sir. Yes, sir. Challenges of COVID-19 in Northeast India, its management by Ayurveda intervention and future strategies. I think the strategies and management protocol, everything has been taken care by the Ministry of Ayush from the forefront, and right from giving the advisory for the general public, advisory to the physicians, and activities in the form of clinical trials and interventions in the containment zones and prophylactic studies in population across the country, as well as the launching of Ayush Sanjeevani app to see the public response of given Ayush advisory to the masses. So all these things equally apply in the Northeast to the state of Meghalaya, Assam, etc. I am fully supporting the viewpoint of Secretary Ayush, and we have taken this courage from him itself, that we have to be proactive in Ayush propagation and intervention throughout the country by our proactive approach. So we should, we all should come forward, and what are the lacunas, what are the hindrances and mental blocks in different areas, different state levels, they have to be identified, and very proactively our additional secretary and secretary has personally talked to the different health secretaries and chief secretaries of the states, and we also faced many problems in containment zones across the country, and all those issues has been resolved. Friends, Ayurveda students has a very good opportunity to see a epidemic in this very bad time. We should say it is not a good time, but we should convert it into an opportunity in learning, and learning as well as propagation of the system. I think if proactively director along with the health authorities of the state come forward and express the will to give their services to the masses in the containment zones and where they have made the COVID hospitals also, I think this opportunity, this challenge can be converted into an opportunity in the Northeast also. And students, while not doing anything and just seeing the scenario of the pandemic, global pandemic, they should also have a habit of exploring their literature also. See how these epidemics happened previously also, and what is the basic concept behind, and what are the modalities, how to deal a particular problem whenever, because at different times different disease conditions emerges, and how to tackle with them, and how to identify, and what approach should be given, and these opportunity should be taken up by these students along with the faculty. Like the I give you one example. This Vishwa-Ayurveda Jwar type fever is this COVID-19. So the whole chapter of Vishwa-Ayurveda Jwar chapter can be critically analyzed, and the viewpoints of students and teachers can be discussed on the platform also, virtual platform as well as physical platform also, and that way this opportunity should be prevailed, and a benefit should be gained out of this. I wish that Dr. P.K. Goswami
will, as per the direction of our secretary, will take these steps forward to help the masses in the Northeast, in Meghalaya also, with their proactive approach, and the results in the future will be there. Friends, don't see that it is a very limited time. We should keep a close watch. It is now expected that the herd immunity is going to come. Means, what does that mean? That it is going to spread to the masses when 2/3 of the population will be having this problem, and they will develop antibodies, then herd immunity will come up. But the idea of sharing this is not to creating a fear among the students and others, but we should keep a watch, and we may get a call from the health authorities that your manforce should also be involved. But don't wait for that. Be proactive and be ready with your armamentarium of Rasayan Aushad as well as curative medicines with you, and help the masses in the way whatever you can do. Because I have to attend another video conference meeting with the outside members also. So I wish all the best and success of the webinar. Dr. Goswami. Thank you, sir. Thank you so much, sir. I would now like to request Vaidya Shivaditya Thakur, Secretary, Vishwa-Ayurveda-Parishad, to kindly share a few words with us. Sir, please. Vaidya Shivaditya Thakur, sir. आदरणीय आयुष सचिव डॉक्टर राजेश कोटेचा जी एवं उनके साथ यहाँ उपस्थित संपूर्ण आयुष टोली, जो आयुर्वेद एवं आयुष के विकास के दृष्टिकोण से किसी भी निर्णय लेने के लिए आधिकारिक रूप से उपस्थित है। हमारे संगठन के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर योगेश चंद्र मिश्र जी, हमारे संरक्षक डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद मिश्र जी, महासचिव अश्विनी कुमार भार्गव जी एवं डॉक्टर पीके गोस्वामी जी, जिनसे मेरी बातचीत आज से 15 दिन पूर्व हुई, और संपूर्ण देश में जिस प्रकार पृथक पृथक राज्यों में हम ये वेबिनार करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में भी एक वेबिनार हो, यह चर्चा असम एवं शेष नॉर्थ ईस्ट के बंधुओं से मिलकर हुई, और उसका प्रकटीकरण मैंने गोस्वामी जी के सामने किया, और गोस्वामी जी शीघ्र ही इस वेबिनार को करने के लिए तैयार हो गए। तो प्रथमतः इस वेबिनार के आयोजन के लिए डॉक्टर गोस्वामी जी को विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से धन्यवाद देता हूं कि NEIAH और विश्व आयुर्वेद परिषद के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। कभी कभी अभिशाप भी वरदान होता है, यही हमको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिला। यह कोरोना विषाणु के संक्रमण के पूर्व हमारा कार्य जितना होना चाहिए उतना नॉर्थ ईस्ट में नहीं था। दिसंबर 2019 में 8 दिसंबर को एक रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कार्यक्रम गुवाहाटी में हुआ था। तब से हमारी चर्चाएं, बातचीत होती रहती थी, लेकिन ये लॉकडाउन के कालावधि में हमारा यह नॉर्थ ईस्ट संपूर्ण उस क्षेत्र के जनता की सेवा के लिए संगठन की तार को दुरुस्त करके और एक बार सक्रिय हो गया। तो पुनः एक बार हम अपने पूरे नॉर्थ ईस्ट के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। विश्व आयुर्वेद परिषद यह आयुर्वेद के अन्य संगठनों से पृथक संगठन है, जो आयुर्वेद के सम्यक और संपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम केवल आयुर्वेद की शिक्षा और चिकित्सा ही नहीं,
आयुर्वेद कैसे लोकोपयोगी हो और जब राष्ट्र को आवश्यकता हो तो राष्ट्रीय आवश्यकता के अवसर पर हम अपने को कैसे प्रस्तुत कर सके। इसीलिए संपूर्ण देश की तरह ही आसाम में भी हमने आसाम के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में भी स्टेट कोऑर्डिनेटर्स और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं, जिनके माध्यम से संजीवनी एप्स डाउनलोड करके और उसको फॉलो करते हुए एक डाटा कलेक्शन की बात जो है, जहां हम कभी-कभी पिछड़े रह जाते हैं, उसको पूर्ण संपादित करते हुए आयुष मंत्रालय को हम समर्पित करने वाले हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 प्रांत में कार्यकर्ता इस दृष्टिकोण से अपनी तैयारी कर चुके हैं और वहाँ प्रिंसिपल साहब शर्मा जी, गुप्ता जी, इन सब ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं का हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। तो इस दृष्टिकोण से विश्व आयुर्वेद परिषद जिस प्रकार संपूर्ण देश में क्रियाशील रहते हुए इस कोविड-19 के विरुद्ध कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहा है, हमारा आसाम और नॉर्थ ईस्ट भी उसी प्रक्रिया में प्रगत है, जिसकी यह प्रथम प्रस्तुति डॉक्टर गोस्वामी जी के द्वारा है। आने वाले समय में एक-एक प्रांत में वहां के जिलों में अपने कार्य को विस्तारित करते हुए एक-एक आयुर्वेद शिक्षक, चिकित्सक और छात्र को हम स्पर्श करने वाले हैं और उनके माध्यम से आयुर्वेद जो भारत की चीज है, जो एक प्रकार से उसका अस्तित्व थोड़ा सा धूमिल होता जा रहा था, लेकिन प्रकृति के सौंदर्य के बीच में यह जो हमारा नॉर्थ ईस्ट बसा हुआ है, इसमें वहां के संसाधनों के माध्यम से एक बार पुनरपि आयुर्वेद के धाती को स्थापित करने के लिए हम नॉर्थ ईस्ट के कार्यकर्ताओं के साथ प्रतिबद्ध है और यह प्रतिबद्धता हमारी आगे चलने वाली है, कार्य रूप में परिणत होने वाली है। लेकिन आवश्यकता है, हमारे कोटेजा जी यहाँ विद्यमान है, कि नॉर्थ ईस्ट के वे प्रांत जहां जहां आयुर्वेद के संस्थान नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है, वहां इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं। इसके लिए केंद्र सरकार को उन राज्यों के सरकार से बातचीत करके आयुर्वेद के संस्थान खोलने पड़ेंगे, ताकि वहां के की जनता, वहां आके आयुर्वेद प्रेमी वो आयुष का शिक्षा ग्रहण कर सके और फिर जो ये हमारा आयुष विकास का क्रम है उसको नॉर्थ ईस्ट में भी बढ़ा सके। नॉर्थ ईस्ट में प्राकृतिक संपदा, जड़ी बूटी की संख्या इतनी पर्याप्त मात्रा में है, जिसका उपयोग करके, जिसके लिए हमारे यहाँ कहा अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभम। हमें योजक तैयार करना है और उन योजकों के माध्यम से आयुर्वेद की प्रगति को शीर्ष पर ले जाने का विश्व आयुर्वेद परिषद का यह संकल्प है। इस संकल्प को दोहराते हुए आप समस्त बंधुओं को, चूंकि समय कम है, हमारे पास तकनीक और विशेषज्ञ वक्ता हमें कुछ बतलाने वाले हैं, मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी मैं विश्व आयुर्वेद परिषद के संरक्षक डॉक्टर SP मिश्रा सर को निवेदित करती हूँ कि वो हमसे थोड़ी अपने बातें शेयर करें। सर प्लीज। SP मिश्रा सर, काइंडली आप अपना वीडियो और ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए सर।
Satyendra sir? He's there. Satyendra sir? Sir, you're not audible to us. हम सुन नहीं पा रहे सर आपको. Satyendra sir, we can't hear you and you're not visible also, sir. के बाद वाला कार्यक्रम चालू करिए. Okay, sir. Okay. I would now like to request Professor B.M. Gupta, sir, National President, Vishwa-Ayurveda-Parishad, to share his words with us. Professor B.M. Gupta, sir. सत्येंद्र मिश्रा जी बोल रहे हैं लेकिन उनकी आवाज आ नहीं रही है. हाँ सर, टेक्निकल प्रॉब्लम होते हैं. हाँ. प्रोफेसर B.M. गुप्ता सर, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए सर. Professor B.M. Gupta, sir. शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है. आप आगे बढ़ जाइए. Okay, sir. I would like to request Professor Yogesh Chandra Mishra, sir, Organizing Secretary, VAP, to share his words of encouragement. Professor Yogesh Chandra Mishra ji. शाश्वत. Yes, sir. You're visible and audible, sir. Yes, Sir, yes, आप हाँ sir. हाँ. हो गया. आज के इस नॉर्थ ईस्ट के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में, जिसमें हमें परमादरणीय मिशनरी स्पिरिट से काम में लगे अति परिश्रमी, उत्साही एवं स्पष्ट दृष्टि के स्वामी डॉक्टर कोटेजा जी और उनके मार्गदर्शन में काम में लगी हुई पूरी शासन की टोली, एकेडमिक क्षेत्र में विश्वविद्यालयों के पूर्व कुलपति, वर्तमान कुलपति, एकेडमिक क्षेत्र के जो पुरोधा रहे हैं ऐसे डॉक्टर बघेल जी, डॉक्टर चंदोला जी, वर्तमान में असम से लेकर शिलांग तक जो आयुर्वेद की मशाल को प्रज्वलित किए हुए हैं ऐसे डॉक्टर बीपी शर्मा से लेकर डॉक्टर गोस्वामी जी, और जो विश्व-आयुर्वेद परिषद के क्षेत्र में भी काम में लगे हुए डॉक्टर खगेन वसुमतारी होंगे, कोई नितिन वर्मा होंगे, इनसे हमारा कोई बहुत परिचय होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक आयुर्वेद के लक्ष्य को काम में लेकर के लगे हुए सभी बंधु। अभी हम लोगों ने जब से ये प्रारंभ हुआ है कार्य,
तब से पूरे क्षेत्र में क्या क्या हमको सफलताएं प्राप्त हुई, कैसे कैसे हमने अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित किया और कैसे कैसे हमको विभिन्न प्रकार के कार्यों का मार्गदर्शन मिल रहा है, इसके बारे में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं मिली हमको। और वास्तव में ये एक ऐसा समय मिला है जिसमें हम अपनी क्षमता का, अपने कार्य क्षमता का, हमारे जो संसाधन हैं उनका और उन संसाधनों के साथ भी विभिन्न प्रकार के सरकार के और बिना सरकार के सहयोग के, माने सरकार के द्वारा भी और जन सहयोग से भी कैसे कैसे कार्यों का कर सकते हैं, इसका प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है। आज की ये जो समस्या है उसमें एक विशेष बात जिसकी चर्चा अभी तक डॉक्टर बलदेव जी ने भी की, डॉक्टर के धीमान ने भी की, जो समस्या आई है वो एकदम ऐसे समय पे आई है जिसका किसी के पास कोई प्रतिकार दिखाई देता नहीं। लेकिन जो शास्त्र सम्मत है, जिनमें लोगों की आस्था, लोगों की व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन आयुर्वेद के लोग जिसको ये मान के चलते हैं कि हम तो आप्तोपदेश को मानने वाले हैं, जो शास्त्र सम्मत है वो सत्य है, उसको मानो सही करने का एक अवसर हमको प्राप्त हुआ है। ऐसे में जो लोग शोध में लगे हुए हैं उनको एक विचार करने का बिंदु भी है। कुछ सौभाग्य की बात होती है, वर्तमान में हम लोगों ने देखा कि हमारे शोध के लिए, आयुर्वेद के लिए जो एक टास्क फोर्स बना, उसके प्रमुख के रूप में जो हमको एक नेतृत्व प्रदान करने के लिए व्यक्ति मिले, डॉक्टर भूषण पटवर्धन, उन्होंने स्वयं अपने एक भाषण में उल्लेख किया कि वो एमएससी के छात्र थे, तो जब बाकी लोग आरएनए और एनडीए पे, डीएनए पे काम कर रहे थे, उन्होंने भल्लातक को कार्य के लिए चुना। भल्लातक की एंटी कैंसरस एक्टिविटी के लिए वो काम करना प्रारंभ किए और जो पुरानी परंपरा है उसी परंपरा में से उन्होंने भल्लातक का अल्कलाइड निकाला। अल्कलाइड निकालने के बाद में जब उसका प्रयोग किया तो जिन प्राणियों पे उनका प्रयोग किया, ऐसे जो छोटे प्राणी थे उनमें से अधिकतर की मृत्यु हो गई। वो बोले, उन्होंने कहा कि जो शॉकिंग टू मी, मुझको लग रहा था कि भल्लातक के प्रयोग से संभव नहीं है। बाद में एक सामान्य वैद्य उनको मिला, उन्होंने कहा कि ये जो अल्कलाइड आप निकाल लेते हैं तो ये प्रकृति के साथ ठीक व्यवहार नहीं है। प्रकृति ने जो चीज जैसी बनाई है उसको उसी रूप में प्रयोग करेंगे तब उसके वो गुण जो आयुर्वेद की पुस्तकों में वर्णित हैं वो आपको प्राप्त होंगे। उसके किसी एक अल्कलाइड को आप परख कर लेते हैं तो आपको ये भी नहीं पता कि उसमें कितने अल्कलाइड शेष है, और प्रकृति में बड़ा एक बैलेंसिंग स्थिति है, उसके एंटीडोट्स भी उसी के साथ रहते हैं। तो ये जो हम लोग जो प्रयोग करते हैं औषधियों का, चाहे वो सरस के रूप में करें, चाहे क्वाथ के रूप में करें, चाहे असवरिष्ट के रूप में करें, जिसको सामान्य भाषा में कहा जाता है कि मूल औषधि को क्रूड रूप में प्रयोग करके उनके सभी घटकों का प्रयोग शरीर में पहुंचाते हैं। तो ये जो एक व्यवस्था है, हमको लगता है कि आगामी शोध में, यद्यपि हमको ये कहा जा रहा है कि भाई आप डाटाबेस तैयार करिए, लेकिन शोध की दृष्टि से इस बात का भी हम लोगों को एक ध्यान रखना पड़ेगा कि वास्तव में शोध की प्रक्रिया में प्रकृति के साथ कम से कम छेड़छाड़ हो। हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद जो है उसका एक आधार निश्चित रूप से बहुत ही श्रेष्ठ वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार है। दार्शनिक दृष्टि से अगर हम विचार करें तो हमारे चारों तरफ जो लोग दिखाई देते हैं, जो संसार दिखाई देता है, चाहे जो सृष्टि दिखाई देती है, उसके चार स्वरूप हमको दिखाई देते हैं। उनके चार नामकरण हम लोग कर सकते हैं। एक है व्यष्टि यानी इंडिविजुअल, सृष्टि, एक व्यष्टि के बाद समष्टि या सोसाइटी, सृष्टि या यूनिवर्स, और परमेष्टि या अलमाइटी ईश्वर। सामान्य रूप से लगता है कि ये सब अलग अलग सत्ताएं हैं, लेकिन ये अलग अलग सत्ताएं नहीं हैं। एक ही सत्ता का ये विकसित रूप है। व्यक्ति विकसित होकर के समाज बनता है, समाज विकसित होकर के सृष्टि बनती है, और सृष्टि ही का जो स्वरूप है वो परमेष्टि का स्वरूप है। इसीलिए ये चार नाम होने के बाद भी आयुर्वेद में बहुत जगह पे जो कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, या लोक पुरुष साम्य, या वैदिक जो परंपरा है एको हम बहुत श्याम, ये सब चीजें वैदिक साहित्य और आयुर्वेद साहित्य में भरी हुई हैं। इन चीजों को भी यदि हम लोग ध्यान देंगे तब निश्चित रूप से हमारी जो शोध की परंपरा है उसमें भी एक अंतर आएगा। अभी एक दो दिन के समाचार पत्रों में एक समाचार आया है, सैफई में एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के जो डायरेक्टर या जो कुलपति है वो डॉक्टर सिंह, आर के सिंह, वो आयुर्वेद के प्रति बड़े निष्ठावान हैं
उन्होंने कोई एक राज निर्वाण बटी का योग किया है और भारत उत्तर प्रदेश शासन ने उनको अनुमति दी है कि इसका प्रयोग करिए, इसका निर्माण भी कराया जाए। तो जैसे एक शासन ने यहाँ दिया है, वैसे बाकी सगळे शासन के लोग भी कुछ अलग अलग विचार के हो सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को देख करके हमको लगता है कि हमको एक नए प्रोटोकॉल की रचना करनी पड़ेगी। और ये जो जिसके लिए विश्व नहीं जानता, मुख्य समस्या क्या है, हमारे जो शोध के कार्य हैं, हम लोगों को कहा जाता है कि ये तो एक कंटेम्प्रेरी या अल्टरनेटिव मेडिसिन है। वास्तव में ये जो कहने वाले लोग हैं वो या तो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं, या WHO के प्रेशर में हैं, या जो मेडिसिनल फार्मा लॉबी है उसके द्वारा लोग हैं। अब उनका इस रूप में तो विरोध हम नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं उस प्रैक्टिकल को देखते हुए निश्चित रूप से हम अपने शोध के लिए भी, और इस दृष्टि से अपना जो केंद्रीय शासन है उसकी दृष्टि बड़ी स्पष्ट है। हमको पिछले 5-6 सालों में यदि हम देखें तो पहले कभी एक जामनगर में विश्वविद्यालय होता था, फिर राजस्थान में आया, फिर राजस्थान के बाद में उत्तराखंड हुआ, पंजाब हुआ और हरियाणा हुआ। शेष जो राज्य हैं उन 25 राज्यों में भी क्या 25 विश्वविद्यालय खड़े हो सकते हैं कि नहीं? ये दृष्टि भी यदि शासन की रहेगी और इसकी दृष्टि से भी दोनों काम करने पड़ेंगे। नीचे भी एक वातावरण बनाना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है ऊपर से ही हमको कुछ कहना पड़े लोगों को, नहीं भाई आप ऊपर का भी परामर्श कई बार रहेगा। तो सब पूरे देश में विश्वविद्यालय जो अनरिप्रेजेंटेड एरिया हैं उनमें शासन के द्वारा स्थापित राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, क्यों जब हम ये विद्यार्थियों को आह्वान कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप आगे आइए, तो उनको एक अध्ययन का भी और वातावरण भी, अध्ययन का भी अनुभव चाहिए, उनको वातावरण भी चाहिए। इन दोनों की दृष्टि से कहिए वातावरण चाहिए। तो मैं इस आज की इस वेबिनार के माध्यम से, जिसमें निश्चित रूप से डॉक्टर गोस्वामी, डॉक्टर असम के प्रधानाचार्य से लेकर के और इस निदेशक तक, डायरेक्टर तक का सब लोग का सहयोग रहा है, उन सबके लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हुआ अपने अधिकारी परिषद के अधिकारियों से, परिषद के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करता हूं कि स्थान स्थान पर शासन के द्वारा इस प्रकार की मांग को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि आयुर्वेद के वातावरण जो दिखाई दे रहा है वो कार्य रूप में परिणत हो सके। और निश्चित रूप से जो अपने माननीय कोठीचा जी शब्द प्रयोग करते हैं, एक विजनरी एंड मिशनरी स्पिरिट से काम करने वाले लोग ही सफल होंगे भविष्य में। तो हमारे कार्यकर्ता भी इन दोनों उनके जो निर्देश हैं मिशनरी मूड में काम करें और एक दूरदृष्टि लेकर के काम करें। ऐसा कहते हुए मैं सब लोगों को, जिन लोगों ने भी मुझको ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे बात रखूं, और जिन लोगों ने भी धैर्यपूर्वक इसको सुना और जिन लोगों ने भी व्यवस्था की, उन सबको धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी I would like to request Professor Ashwini Kumar Bhargava, National General Secretary, Vishwa-Ayurveda-Parishad, to kindly share his words with us. Sir, please. नमस्कार, थैंक यू सो मच। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम सब नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। पीके गोस्वामी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हम सबको इस खास करके रीजन 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं उसके कार्यकर्ताओं से कि मिलने का मौका मिल रहा है, और वहां काम करने वाले जितने भी आयुर्वेदज्ञ हैं उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। और पूरी ऐसी टीम जो कि गवर्नमेंट की है, जिसमें कोटेचा जी हमारे साथ हैं और के.एस. धीमान जी और डॉक्टर कटोच जी, और ये पूरी टीम दिन रात एक करके आयुर्वेद के लिए काम कर रही है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। अभी कोरोना के काल में तो ये सब चल ही रहा है, इससे पहले भी आयुर्वेद को किस प्रकार से पुनर्स्थापित करना है, इसके लिए ये सब पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं। हम सबको मालूम है कि हमें आजादी तो मिली है, आजादी हमें ये सब काम करने की अभी आजादी नहीं मिली। जिस प्रकार से हमने देखा है कि अपनी जितने भी इंडियन साइंसेस हैं, मैकॉले की जो शिक्षा प्रणाली है उसने इंडियन साइंसेस को नीचे करने का काम किया। उतना शायद नुकसान मुगल भी हमारा नहीं कर पाए जितना कि मैकॉले की शिक्षा प्रणाली ने किया।
शायद मुगलों ने हमारी लाइब्रेरियां जलाई, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आयुर्वेद को हम लोग संभाले रहे गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार। लेकिन ये जो मैकॉले शिक्षा प्रणाली जब से लागू हुई और यूनिवर्सिटी सिस्टम ऑफ टीचिंग आया, तो उसको बिल्कुल फॉरेन स्तर के ऊपर उसको लागू करने का प्रयास किया, और इसलिए अभी तक भी हमारी जितनी भी मतलब ये ट्रेडिशनल साइंसेस हैं, उन सब को प्रोत्साहन मिलना उतना पॉसिबल नहीं हो पाया पिछले सालों में जब से हम आजाद हुए। अभी भी वही समस्या हम सबके सामने देखने को मिली। जब हम लोगों ने कोरोना की बात की तो उस समय भी ऐसा ही आया सभी जगह से कि आयुर्वेद को ऐसा एक मौका मिलना चाहिए जो कि उसके अंदर टाइम टेस्टेड मेडिसिन पड़ी हुई हैं, उनको इन पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट करने के लिए। लेकिन उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। मैं साधुवाद देता हूं कोटेचा जी को, और जिन्होंने एक ऐसी टीम भी बनाई जो कि कोविड के लिए स्पेशली मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क फोर्स को बनाया, तो जिसने पूरी मेहनत करके, हालांकि उसको कभी मुझे लगता नहीं कि अभी बजट की कोई प्रॉपर अलॉटमेंट हुई होगी, लेकिन उन्होंने मिशनरी स्पिरिट पे सब काम करते हुए ये अप्रूवल जो है आईसीएमआर से लेने का प्रयास किया। उसके लिए आईसीएमआर भी बाधा बना। हमें इस बात के लिए विचार करना चाहिए कि आयुर्वेद की दृष्टि से जब सीसीआरएस हमारे पास है, तो सीसीआरएस के होते हुए हमें इस परमिशन को लेने के लिए आईसीएमआर के पास जाना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसी एजेंसी को अभी कोविड के दौरान काम करने के लिए कहा है, और डब्ल्यूएचओ के साथ हमें मिलकर काम करना पड़ता है। लेकिन हमें इस बात के ऊपर विचार करना पड़ेगा कि हमें ऐसा क्या सिस्टम हम कोई बना सकते हैं जिसके माध्यम से हम लोग अपने तरीकों की, मुझे लगता है कि चिकित्सा के लिए भारतवर्ष में किसी भी प्रकार की चिकित्सा लेने का अधिकार सबके पास है। हम बाउंडेड नहीं है कि हम लोग एलोपैथी की चिकित्सा लेंगे या होम्योपैथी लेंगे या आयुर्वेदिक लेंगे। हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसे किस प्रकार की चिकित्सा लेनी। तो इसके दौरान सिर्फ हमें यही कहा जाता रहा है कि आप लोग सिर्फ अगर जैसे पेशेंट्स को अलग अलग कैटेगराइज करके आप यहाँ पे एलोपैथी देंगे, और फिर भी आप लोगों के प्रयास से ये सब हो पाया कि अब हम इस स्थिति में है, जैसा आज कोटेचा जी ने बताया, कि हम ओनली कोविड हॉस्पिटल्स, ओनली कोविड इंटरवेंशन जो है आयुर्वेद के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। ऐसी बात हम सबके सामने आई है। उसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूं। और दूसरा, कोटेचा जी के साथ भी हमारी कुछ दिन पहले बैठक हुई थी विश्व परिषद की, और डॉक्टर जेएलएन शास्त्री जी ने भी, जो कि अपना टास्क फोर्स के मेंबर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी हमारे एक जो ऑल ओवर इंडिया से लगभग सभी स्टेटों से जो कार्यकर्ता जुड़े थे, उनके साथ बातचीत करते हुए हमें बताया कि हम लोग इतनी बड़ी स्टडी करना चाहते हैं जिसके माध्यम से कि हम लोगों विश्व के सामने ये बात रख पाए कि आयुर्वेद इंटरवेंशन से कितना फर्क पड़ रहा है। उसके लिए हमने आप सबको सहयोग देने का बीड़ा उठाया था। हमने कहा था कि विश्व-परिषद अभी से ही, उसी दिन से ही इस काम के लिए लग जाएगा कि जो कि आयुष संजीवनी ऐप आप लोगों ने जारी किया है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को डाउनलोड करवाना, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स जो है उसके साथ जुड़े, ताकि जो स्टडीज हैं उनको प्रॉपर ढंग से गवर्नमेंट तक पहुंच पाए। जैसा अभी मालूम हुआ है कि 20 लाख लोगों की स्टडी अभी तक गवर्नमेंट के पास पहुंची है। तो अभी हमें और मिशन मोड पे काम करना होगा। जैसे अभी कोटेचा जी ने बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अभी ये काम जो है अभी स्लो है, उतना नहीं है जितना कि पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सबसे आह्वान करना चाहूंगा कि हम लोग पूरी फोर्स के साथ, जिस प्रकार से सरकार के ये हमारे अग्रणी लोग लगे हुए हैं, उसी फोर्स के साथ हम लोग विश्व परिषद में भी इस काम के लिए लगेंगे, ऐसा मैं आप सबको आश्वासन देता हूं। दूसरी बात मैं एक और यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि अपनी जो सरकार है इस समय की, उसने स्पेसिफिकली आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आयुष मिनिस्ट्री में कोटेचा जी ने आयुष मिनिस्ट्री का एमएसएमई मिनिस्ट्री के साथ एक एमओयू साइन हुआ पिछले दिन, और उसके माध्यम से हम सबको, जो भी व्यक्ति उसमें से कोई एड लेना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं आयुष के क्षेत्र में,
अगर वो उसमें जो आधार उद्योग आधार करके MSME का एक वेबसाइट है, उसके अंदर हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों के लिए है। सर्विस सेक्टर में हम सबको मालूम ही है कि हम लोग अपने हॉस्पिटल्स रन कर सकते हैं, 5 बेड हॉस्पिटल चला सकते हैं, वेलनेस सेंटर्स खोल सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग इंडस्ट्री, अगर हमारी बहुत ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को वहां पे एनरोल होके उनके लिए स्पेशल कुछ ऐसी योजनाएं बनाई हैं सरकार ने कि वो आगे बढ़कर काम कर सकें। इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे अभी बताया भी गया कि यहाँ बहुत ही अब तो औषधियों का एक किस्म का भंडार है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे ऐसे कुछ छोटे छोटे उद्योग जो है उनको स्टार्ट कर पाएंगे और मेडिसिन को उगाने का काम कर पाएंगे, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता आने वाले समय में है। ये दोनों बातें मैं आप सबके सामने रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमें दो ही काम करने हैं। एक तो आयुष सेक्टर के लोग ज्यादा से ज्यादा उद्योग आधार के साथ जुड़कर अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ाएं, ताकि हम बहुत सारे लोगों को रोजगार पैदा करके दे पाए। और दूसरी बात, आयुष संजीवनी ऐप के माध्यम से हम लोग स्टडी करके सरकार तक उसको पहुंचा पाए, ताकि सरकार स्टडी कॉस्ट जहां भी उसको रखना है उस माध्यम से आगे रख पाए। ये दो बातें जो है अभी हमें मिशन मोड पे लेनी है। तीसरी बात जो एक डॉक्टर बलदेव जी ने भी हमारे सामने रखी है, ऐसा कि एलोपैथी और आयुर्वेदा को जोड़कर कुछ स्टडीज चल रही, कुछ मेडिसिन इस प्रकार की भी हैं जिसको ICMR अप्रूव कर रहा है। कि ऐसी स्थितियों में हम लोग कहाँ खड़े होंगे? जो ऐसी एलोवैदिक मेडिसिन बनेगी उनका स्टेटस क्या होगा लाइसेंसिंग की दृष्टि से, और क्या वो पेटेंट लेके काम करेंगे, क्या वो ओपनली काम करेंगे? इस बात के ऊपर अभी हम सबको विचार करना है और इसके ऊपर स्टडी भी करना है। एक जो बात अभी अपने जो CCRS के डायरेक्टर साहब ने हमारे सामने रखी कि हमको आगे बढ़ते हुए, जैसे फीवर की जो बात है, और अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने टीचर्स हैं, उनको छोटे छोटे ऐसे वेब की क्लासेस के माध्यम से इनके ऊपर अच्छी स्टडी को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़े। तो विश्वा परिषद आप सबके सामने इस बात को रखता भी है और आपको इस बात का आश्वासन भी देता है। हम पूरे भारतवर्ष में इन सब चीजों को लागू करने के लिए आने वाले समय में और भी तेजी से और मिशन मोड से काम करने का प्रयास करेंगे। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और दूसरी बात, और अपने इस इंस्टीट्यूशन ने नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट जो है होम्योपैथी और आयुर्वेदा के लिए, इसने विश्व-आयुर्वेदा परिषद के साथ मिलकर ये जो वेबिनार किया है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में जहां भी आप जाना चाहें, आप कोई भी स्टडी करना चाहें, हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी बात के मिशन मोड में आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। आप जहां भी लगाएंगे हम सब काम करेंगे, और हम चाहते हैं कि आयुर्वेद भारतवर्ष में भी बढ़े और पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका जो है बजे। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय भारत। धन्यवाद भार्गव सर। Now I would like to request Professor Mahesh Vyas sir to kindly share his words with us. Sir, please. Thank you. Honorable Secretary आयुष पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, और जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि आयुर्वेद की पूरी क्रीम मीन्स स्टालवर्ड्स ऑफ आयुर्वेद पूरे भारतवर्ष के यहाँ पर उपस्थित है, उन सबको प्रणाम। और विशेष रूप से मैं नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी के डायरेक्टर जो हैं प्रोफेसर PK गोस्वामी जी, उनको हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर पूरे भारतवर्ष को
ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ सभी जगह के आयुर्वेद के एक्सपर्ट को एक साथ जोड़ा और आज जो पैंडेमिक कंडीशन कोविड के कारण है इसके ऊपर विचार विमर्श के लिए सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उनके माध्यम से, इसलिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। अभी हमारे बीच में जैसे कि प्रोफेसर के.एस. धीमान जी ने अपने विचार रखे थे, प्रोफेसर डॉक्टर डी.सी. कटोच जी जो एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैं, और जो न केवल जामनगर में अपितु जिनकी डायरेक्टरशिप में चौधरी ब्रह्म प्रकाश इंस्टीट्यूशन काफी आगे बढ़ा, प्रोफेसर एच.एम. चंडोला जी, प्रोफेसर एम.एस. बघेल जी जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं IPGTNRA जामनगर के, उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलने वाला है। प्रोफेसर B.K. द्विवेदी जी, K.K. द्विवेदी जी और B.P. शर्मा जी, साथ ही विश्व-आयुर्वेद परिषद के माननीय प्रोफेसर S.P. मिश्रा जी, प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्र जी और डॉक्टर अश्विनी भार्गव जी, प्रोफेसर B.M. गुप्ता जी, शिवादित्य जी, ये सभी लोग इस मंच पर उपस्थित हैं और सभी के जो अनुभव हैं, कुछ लोगों ने अपने अनुभव यहाँ पर शेयर किए हैं, कुछ लोग अभी अपनी पूरी बात को रखने वाले हैं। तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है आज कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में और विशेषकर पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी के प्रयासों से आज जो आयुर्वेद के जो प्रोटोकॉल्स बने हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतने अच्छे प्रोटोकॉल बना रखे हैं आयुर्वेद के भी कि अगर प्रेग्नेंट लेडी अगर कोविड पॉजिटिव है तो उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने पूरा फुल प्रोटोकॉल बनाया है। अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज है, कोई ब्लड प्रेशर वाला व्यक्ति है, तो उसके लिए कोविड की कंडीशन में हमको क्या क्या ट्रीटमेंट करना है और उन चीजों को ICMR के थ्रू और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के इन सभी के साथ में सामंजस्य बिठा करके जो एक सभी जगह पहुंचाने का कार्य किया है, निश्चित रूप से पूरा आयुष मंत्रालय उसके लिए बधाई का पात्र है। अब इस कंडीशन में मैं एक आध बात मुख्य रूप से कहना चाहूंगा कि आज का जो टॉपिक है इसमें विशेष रूप से आयुर्वेदिक इंटरवेंशन की बात की गई है और जो हमारे मुख्य स्पीकर हैं वो उन्हीं चीजों को विशेष रूप से हम सब के बीच में बताएंगे। मेरा ये कहना है कि अभी की जो कंडीशन है, इस कंडीशन में एक तो लॉकडाउन की कंडीशन रही, स्टार्टिंग में लॉकडाउन की कंडीशन में भी कई लोगों को चूंकि उनके सभी प्रकार के कार्यकलाप जो है वो बाधित हुए, तो उसके कारण कई लोगों में डिप्रेशन या स्ट्रेस की कंडीशन रही, या किसी व्यक्ति को केवल इतना पता लग जाए कि वो कोविड पॉजिटिव है तो इस कंडीशन में वो डिप्रेशन में चला जाता है, काफी स्ट्रेस फुल उसकी लाइफ हो जाती है। या कहीं कहीं पर ऐसा मैंने अभी देखा एक रिपोर्ट में कि एक परिवार के 8 से 9 लोग पॉजिटिव मिले और उनके परिवार में जो व्यक्ति स्वस्थ थे उनको कोई दिक्कत नहीं थी, उनका ब्लड शुगर टेस्ट कराया गया तो 310 फास्टिंग ब्लड शुगर निकला, मीन्स केवल स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण। तो मेरा कहना है कि कोविड की इस कंडीशन के बाद में भी और जो कोविड की कंडीशन में कुछ मानसिक भावों का अगर हम विचार करें, जैसे कि आयुर्वेद में मानसिक विकारों की चिकित्सा के लिए कहा गया मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, तो इसमें से किस चीज को हम उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए खास तौर से देखिए जो इस सूत्र में भी बताया गया कि हम थोड़ा सा मोटिवेशन अगर उनको दें। अभी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में जिसको CHC है कोविड हेल्थ सेंटर के रूप में उसको नॉमिनेट किया गया और यहाँ पर पॉजिटिव जो कोविड के पेशेंट है उनका आयुर्वेद के मान से ट्रीटमेंट प्रारंभ होने ही जा रहा है। तो वहां पर जो व्यवस्था की गई उसमें एक तो मोटिवेशनल स्पीच कुछ हमने इस टाइप के कलेक्ट किए हैं कि सुबह के समय या शाम के टाइम पे जो उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ में उनको थोड़ा सा मोटिवेशन के रूप में हम कुछ प्रदान करें। साथ ही स्पिरिचुअल चैंटिंग, कुछ चैंटिंग हमने सिलेक्ट की है और उस सिलेक्शन के बाद में उसको वहां पर सभी जगह हर एक रूम में जहां पर पेशेंट एडमिट रहेंगे उनको सुनाने के लिए ओम चैंटिंग है। बिल्कुल सरल जो चीज है जिनको व्यक्ति बड़े अच्छे से आंख बंद करके सुन सकता है और अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सकता है। और एक बात और मुझे जो ज्यादा ठीक लगी और वो यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में कि ज्वर का जो वर्णन है, जैसा कि प्रोफेसर के.एस. धीमान जी ने कहा था वात/में ज्वर के साथ में हम कोविड की कंडीशन को कोरिलेट कर सकते हैं। तो जहां पर चिकित्सा बताई गई है चरक संहिता में और वहां पर विष्णु सहस्त्र नाम का जो उल्लेख किया गया है कि विष्णु नाम सहस्त्र न ज्वरान सर्वान विपोहति, तो ज्वर में जिस प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम का प्रभाव होता है तो हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कोविड के जो पॉजिटिव पेशेंट है
उनको भी प्रातः काल और सायंकाल में थोड़ी देर के लिए विष्णु सहस्त्र नाम को बिल्कुल स्लो वॉल्यूम के साथ में हम उनको सुनाते हैं। अगर उसका भी कुछ परिणाम मिलता है तो उसको हम देख सकते हैं। और इसके साथ में रिक्रिएशन एक प्रारंभ किया है, जो कि वहां पर रहने वाला व्यक्ति जैसे लाफ्टर है या कुछ और एक्टिविटी है, उनके द्वारा वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करें और वो अपने आप को ये भूल जाए कि मैं कोविड पॉजिटिव। तो चिकित्सा तो जो आयुर्वेद का हमारा प्रोटोकॉल है उसको हम फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ में सभी जगह हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का वो बना रखा है कि उनके साथ में हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। और सभी जगह इस टाइप से टीवी यूनिट लगा रखा है कि उनको हम न केवल चिकित्सा के इस प्रकार की स्पिरिचुअल और मेंटल स्ट्रेस वगैरह को कम करने के लिए हम प्रयास करते रहे। तो अभी हमारे सभी स्पीकर्स हैं जिनके उद्बोधन हमको सुनने को मिलेगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाते हुए मैं एक बार पुनः प्रोफेसर पी के गोस्वामी जी को, उनकी पूरी टीम को, डॉक्टर खगेन और जो उनकी पूरी टीम है, विश्व आयुर्वेद परिषद के जो कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट के सभी लोग, तो उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से मेरा जो प्रयास है वो स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। एक बार पुनः सभी को धन्यवाद, नमस्कार। Thank you so much, sir, for highlighting the importance of the psychosomatic aspect in COVID-19. Thank you, sir. We have amidst us Dr. S.P. Mishra, sir. Sir, I would like to request S.P. Mishra, sir, to kindly deliver his speech. Sir, please. Satyendra Prasad, sir. I think the same problem is there again. Sir is speaking, but he is not audible to us. Okay. Professor B.M. Gupta, sir. Professor B.M. Gupta, sir. Professor B.M. Gupta, sir. Okay. He's there, but he's not responding. Okay. So, with the permission of Secretary, sir, and other revered guests, we would like to move forward with the lectures for today. So, may we? आप आगे बढ़िए प्लीज, आपका कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। I regret that I have to leave for some other meeting. So thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. I would now like to request Professor M.S. Baghel, sir, former Director, IPGTRA, to deliver his lecture on the topic Perspective of Etiopathogenesis of COVID-19 and Ayurvedic Analysis. Sir, please. Thank you, Dr. Goswami ji, for inviting me. Respected Secretary, sir, all the officers of the ministry and office bearers of the Vishwa-Ayurveda-Parishad. Sir, today I will like to put forward some topics and like to put up my views regarding those. Since the last 3 months, we are discussing the COVID in the various platforms. And as per Ayurveda, it is very clear, and this disease can be included in the already described literature. Friends, if you know, there are more than 2,00,000 viruses known till date. And out of that, nearly 300 viruses have appeared in the human. And this all results, starting for, if you remember, this Ebola to various other viruses, they are occurring due to the various
activities done with the animal. So first, I will like to say that Charak has described the few particular steps how to study a new disease which is appearing in our domain and which is not as it is described there. So in the Charak Sutra Sthan 18, while describing that there may be innumerable diseases, so we should know the three things, that is a Vikar, Prakriti, Samasthan and Adhisthan Antaraj. These are the three things which we should disease making the proper treatment protocol and starting the treatment. This disease is no doubt a Janpadik disease. Friends, there are some questions posed by few of our scholars that this is not a epidemic, this is not a Janpadodhvans, because all the factors, Deshakal, Jalvayu, are not showing the characters which are described in the Vimanasthan 3. But friends, there is a very clear description by the that when all the persons of a society having the different ahar, prakriti sattva, sattva, etc., are involved by the same disease, a disease having the same character, that is a Janpadodhvansik Vyadhi. So it should not be confused that this is Janpadodhvansik. Another confusion is being created. Okay, this is Aufsargik Vyadhi, which has been very beautifully described by Sustrut, and they say it is Aufsargik, not Janpadodhvansik. So it is Aufsargik, along with it is Janpadodhvansik. And in Janpadodhvansa, there may be disturbance in the Desakala Jalvayu, visible disturbance, but even without visible disturbance, the disease may occur. Like Susruta says, without Ritu Vyapat, the disease can occur. And the disease syndrome described by Susrut in chapter 6, Sutra Tham chapter 6, is very similar to the COVID-19 character. Even anosmia is described Gandha Gyan, Gandha Agyan. Even Gandha Agyan is described in that syndrome. इसलिए आप लोग अपना बड़ा फंडा क्लियर करके रखेंगे कि ये एक जनितक व्याधि है, ये व्याधि औपसर्गिक व्याधि है, और औपसर्गिक होने के साथ साथ ये जो है ऋतु व्यापत्ति इसमें बहुत ज़्यादा होने की आवश्यकता नहीं है. तो इन चीज़ों के साथ डिस्कस करते हुए जब हम आगे जाते हैं, तो अगर आप सामान्य संप्राप्ति देखना चाहें तो जो व्याधि के विभिन्न घटक हैं, जब उनको हम डिस्क्राइब, तो सबसे पहले ये व्याधि है, एक औपसर्गिक व्याधि है और आशुकारी है. ये जनपदिक है परंतु दारुण है और ये अभिसंगत है. मित्रों, एक बात और सबके ज्ञान में रहना चाहिए कि ये व्याधि विभिन्न प्रकार के जो है डोमेन्स में अपने को मिल रही है, और जिसको हम कहते हैं आज के समय में ये विस्मारंभी है. किसको होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये नॉलेज नहीं है. ज्वर के साथ शुरू हो रही है, इसका ज्वर भी स्टेबल प्रकार का नहीं है, इसलिए ये व्याधि तो निश्चित रूप से विस्वत ज्वर ही है, और ये वात कफज प्रधान विस्वत ज्वर है, जिसको आगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ती है व्याधि, तो ये सन्निपातिक ज्वर में जो है तो ये विषम सन्निपात में कन्वर्ट होती है. अब इस व्याधि को अगर आप देखें तो इसके जो भेद आज उपलब्ध हैं, वो पहला एक बहुत बड़ा वर्ग है जो है एसिम्प्टोमेटिक, दूसरा वर्ग है अणुविकार जन्नम या असर्वलिंग विकार जन्नम. तो इसमें
कम लक्षणों वाली व्याधि हैं जिनको लो इंटेंसिटी व्याधि है, या अल्प लक्षणों वाली है, फिर उससे तीव्र लक्षणों वाली व्याधि है, और उससे अंत में सर्व लक्षण युक्त व्याधि है जो अत्यंत दारुण और दुखदायक होती है। परंतु इन सब चीजों पे विचार करते हुए आप लोग बहुत जगह कंफ्यूज करते हैं और अटक जाते हैं। वो है एक व्याधि क्षमत्व शब्द। कुछ हमारे पढ़ने पढ़ाने की परंपरा, कुछ संस्थाओं में विचार की परंपरा गड़बड़ हुई। व्याधि क्षमत्व ओज नहीं है, ओज एक रिजल्टेंट प्रक्रिया। हमारे यहाँ आप शुरू करेंगे सबसे पहले आपके पास अग्नि, जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो अग्नि है। कोई भी निदान का सेवन होता है उससे अग्नि वैषम्य होता है। अब यहाँ पे एक प्रक्रिया और शामिल है, निज और आगंतुज। इसमें भी थोड़ा सा हमारे विद्वानों में विचार विभेद है कि चूंकि जो निदान बाहर से आया है इसलिए नहीं है। हमारा शास्त्र इस में चरक सुश्रुत वाग्भट तीनों ने बड़ी स्पष्ट रूप से कहा है कि जब दोष प्रकोप के साथ व्याधि होती है तो वो निज व्याधि है, और जब व्याधि पहले हो जाती है, पीड़ा पहले, व्यथा पहले उत्पन्न हो जाती है और दोषों का अनुसंग बाद में होता है तो वो आगंतुज है। उसके उदाहरण उन्होंने दिए कि अभिघात, शकुन, विद्युत, असनी, ये जो हैं जो पहले पीड़ा करते हैं, दोष अनुसंग बाद में होता है। एक चीज और आप ध्यान में रखें कि निज व्याधियां आगे आगंतुज में कन्वर्ट हो सकती हैं और आगंतुज व्याधियां निज में कन्वर्ट हो सकती हैं। ये भी शास्त्र में उचित परंपरा दी हुई है। तो इसको बिना कंफ्यूज किए हुए अब आपके पास इतनी सारी डायग्नोसिस हमने दे दी कि ये जानपदिक व्याधि है, औपसर्गिक है और प्रायः करके निज व्याधि है, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। सर्टेन पीरियड के बाद धीरे धीरे दोषों के प्रकोप के लक्षण पैदा होना शुरू होते हैं और जिसके बाद जो है आपको ये व्याधि पैदा होती है। अब कोई भी व्याधि पैदा होने के पहला आपका डिफेंस है वो है अग्नि। दूसरी डिफेंस लाइन अप है आपके जो धातुएं हैं, तो धातुओं का दो प्रकार का जो है आपके पास उपलब्ध है। एक जो सर्कुलेटिंग फेज में धातु है जिसको आप पोष और पोषक में कहते हैं। तो जो आर्गन्स हैं वो स्थायी धातुएं हैं। खा वैगुण्य वहां पर पैदा होता है और वो खा वैगुण्य आवश्यक है दोषों के स्थान संश्रय के लिए, और वो खा वैगुण्य जब तक पैदा नहीं होता है तब तक कोई भी व्याधि पैदा नहीं होती। दोष कोई भी व्याधि पैदा नहीं कर सकते अगर खा वैगुण्य नहीं। तो इसलिए मित्रों इस बात को ध्यान रखिए। तो जो आज व्यवस्था आप जो है रोग प्रतिरोध की कहते हैं, जिसको चरक ने और आगे चल के चक्रपाणी ने बड़ी अच्छी तरह क्लियर किया है कि ई खल निदान दोष दूष विकार विघात भावा भाव प्रतिवेशेषा भवन। तो विकार के पैदा करने वाले भावों का होना और न होना, तो होने में भावों का होना ये है कि अग्निमांद्य हो, दोष वैषम्य हो और आगे धातुओं का दौर्बल्य हो, जिसको हम दूसरे दौर्बल्य कहते हैं। ये प्रक्रियाएं सबसे पहले आवश्यक हैं। अगर किसी में ज्यादा मात्रा में है तो उसको व्याधि बहुत तीव्र जल्दी से और आगे आशुकारी हो जाएगी। परंतु अगर ये प्रक्रियाएं जो है लोगों में ज्यादा मात्रा में नहीं है तो इसलिए ये प्रक्रिया जो है धीमे धीमे चलेगी और लोग जो है ये व्याधि आगे बढ़ती रहेगी। इसके बाद ओज अंत में शामिल होता है इस प्रक्रिया में। जब धातुओं का निर्माण कार्य बाधित होता है, आगे पोषण नहीं होता है और जिसमें ओज का भी क्षय हो गया है, ऐसे लोगों में जो आप साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, जिससे आगे चल के जो फैटल कंडीशंस पैदा होती हैं, तो साइटोकाइन स्टॉर्म विल रिजल्ट ड्यू टू ओजो व्यापक। तो इस बात को आप क्रम से ध्यान रखें कि हमको अग्नि ठीक रखना है, धातुओं को ठीक रखना है, दोष को समावस्था में रखना है और ओज का विवर्धन करना है। ये चार प्रक्रियाएं करनी है। सिर्फ व्याधि क्षमत्व में ओज नहीं है,
व्याधि क्षमत्व एक आयुर्वेद के अनुसार एक पूरी प्रक्रिया है जो इस प्रकार से पूरे क्रम से घटित होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप आयुर्वेद के अनुसार विचार करेंगे तो ये जो कोमार्बिडिटी वाली बात है, तो कोमार्बिडिटी की बात को समझने के लिए आपको चरक सूत्र 17 में जाइए, तो वहां पे कियंता शीर्षी अध्याय जो है, तो वहां पे आप तीनों मर्मों की बात कही गई है और वो एक अध्याय नहीं है। आप चिकित्सा स्थान 26 में जाइए या सिद्ध स्थान 9 पे जाइए, ये तीनों मर्म जो है हमारे धातुओं के क्षय के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी कोई व्याधि होती है, चाहे वो डायबिटीज हो, तो डायबिटीज भी धातु क्षय कारक है। तो और जितना जितना धातुओं का क्षय होता जाता है उतना ये तीनों ऑर्गन, हृदय, मस्तिष्क और सिर जो है आगे खवे गुण्यकर होते चले जाते हैं। इनमें व्याधियों की होने की संभावना उतनी बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब भी हम अपनी जो है संप्राप्ति बनाएं, तो आप ज़्यादा सरलता से काम कर सकते हैं। तो व्याधि को आप विषम ज्वर के तरीके से देखें। अभी हमारे महेश व्यास जी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि मानस रोग की चिकित्सा करनी। व्यास जी, मैं आपको ध्यान दिला दूं, विषम ज्वर का चिकित्सा सूत्र देखिए, और उन्होंने कहा है कि मानस रोग की समस्त चिकित्सा करनी है विषम ज्वर। ये बात चरक ने चिकित्सा सूत्र के रूप में कही है। तो इसलिए विषम ज्वर की अगर लाइन पे आप चलते हैं तो मानस रोग की समस्त चिकित्सा भी आपको रोगी में देनी ही देनी है। ये चरक का सिद्धांत है। अब इसमें जो आप दूष्य और स्रोतस की बात करते हैं तो वो बड़ा क्लियर है। एक बात फिर से आपको मैं याद दिला दूं कि डोंट जंप टू द प्राण व स्रोतस। ये प्राण व स्रोतस की व्याधि नहीं है। किसी भी व्याधि की संप्राप्ति बिना रस व स्रोतस के शुरू नहीं होती। किसी भी व्याधि, दूध से तो रसवा ही है, दोषों का संबंध पूरे शरीर में होगा। अब रसवा स्रोतस में उसका मैनिफेस्टेशन होगा या नहीं, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसमें खवैगुण्य है कि नहीं। परंतु ये रसवा स्रोतस से उत्पन्न होने वाली व्याधि है जो आगे प्राणवाह स्रोतस से होते हुए अन्य स्रोतसों को इन्वॉल्व करती है। इसमें दोष जो है प्रमुखतया कफ और वात हैं, जिसमें आनुषंगिक रूप से पित्त और रक्त शामिल होते चले जाते हैं। शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि अभी जो स्किन रेसेस हैं वो भी नई सिम्टोमेटोलॉजी में जोड़ दिया गया है और कोठ की उत्पत्ति भी इसमें व्याधि में जोड़ा गया है। तो ये रक्त का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाता है और जिसके कारण उन्होंने कहा कि थ्रोम्बोसाइटोसिस होती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होती है और वहाँ पे जो है ब्लड वेसल्स में इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके कारण जो है जिन केसेस में डेथ होती है वहाँ पे ये इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जैसा सभी लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, इस व्याधि को अच्छी तरह समझिए। ये आयुर्वेद से पूरी तरह क्योर की जा सकने वाली व्याधि है। हम निश्चित रूप से क्योर कर सकते हैं, पर जैसा आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि किसी भी व्याधि की साध्यता परीक्षा आपको जरूर करनी है। अरिष्टों की उत्पत्ति हो रही है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सौभाग्य से इस व्याधि में सिर्फ 1% चांसेस हैं अरिष्ट उत्पन्न होने के और जो है दारुण मोक्ष होने की जो है अवस्था आ सकती है। इसलिए इसको आयुर्वेद को क्रम से उसके फॉर्मेट में पढ़ें, आपको व्याधि तुरंत समझ में आएगी और रुग्ण को देखते हुए अगर आपके पास आता है तो आप तय कर सकते हैं कि हमको रस पाचन करना है, रक्त पाचन करना है, प्राणवायु स्रोतस का रिससिटेशन करना है, संरक्षण करना है, रक्त का समन करना है। किस अवस्था तक व्याधि पहुंच चुकी है उसको कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैंने थोड़ी समरी में आपको इसको संप्राप्ति को बताने की कोशिश किया। सभी आचार्यों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि बहुत अच्छे से एक सारांश देके आपने हमें रोग का संप्राप्ति समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू सर। Now I would like to request Professor H.M. Chandola sir, former Director, CBPACS, New Delhi, to kindly deliver his lecture. The topic of sir is Framework of Society-Based Management of COVID-19. Sir, please.
Thank you very much, Dr. Goswami ji, Director, Northeast Institute of Ayurveda and Homeopathy, to give me an opportunity to be with you all at this moment. And आपका पुरुषार्थ बताता है कि किस तरीके से आपने सेक्रेटरी साहब, उनकी पूरी टीम, डॉक्टर DG CCRS, डॉक्टर धीमान जी, एडवाइजर डॉक्टर कटोच जी, और साथ में अनेक महान विभूतियाँ, डॉक्टर बलदेव धीमान, ऑनरेबल वाइस चांसलर, और हमारे उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर डॉक्टर SP मिश्रा जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम उनका उद्बोधन सुन नहीं पाए, और मेरे अजीज दोस्त एक्स इंचार्ज वाइस चांसलर ऑफ गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर MS बघेल साहब, मेरे मित्र डॉक्टर महेश व्यास जी, प्रिंसिपल डॉक्टर विष्णु जी, एक से एक महान विभूतियाँ हैं, डॉक्टर KK द्विवेदी, डॉक्टर BK द्विवेदी, विश्व आयुर्वेद परिषद के अदर ऑफिस बेयरर्स, डॉक्टर योगेश जी, डॉक्टर शिव आदित्य जी, आप सबको मेरा, अश्वनी जी, आप सबको मेरा बहुत बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। गोस्वामी जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि देखिए डॉक्टर कोटेचा जी का पूरा वरद हस्त आपके ऊपर है। आपने अपनी प्रॉब्लम रखी और उन्होंने कहा कि यू राइट मी फ्यू लाइन्स, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो दिस इज द स्टाइल ऑफ वर्क ऑफ डॉक्टर कोटेचा जी, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन स्पॉट। आपको एक मैं बात बता दूं, थोड़ा विषय से अलग हटके है, थोड़ा मुझे परमिट कीजिएगा। आपने मुझे 9 मिनट दिए, अगर मैं 1-2 मिनट ज़्यादा ले लूँ तो। डॉक्टर कोटेचा जी उस समय पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर थे जामनगर में, और हॉस्टल के बाहर सड़क पे एक आदमी बिल्कुल जैसा कि अनकॉन्शियस स्थिति जैसा उस स्थिति में था, सिर उसका फटा हुआ था और घाव में उसके कीड़े पड़ गए थे, मैगट्स पड़ गए थे, और कोटेचा जी उसको ऑटो रिक्शा में लिटा करके और सीधे सामने एयरविन हॉस्पिटल में ले गए। अभी वो गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल है, MP शाह मेडिकल कॉलेज का, सड़क के इधर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी और सड़क के पास मेडिकल कॉलेज है, और वहाँ उन्होंने उसका ट्रीटमेंट कराया। अपनी जेब से पैसा खर्च करके वो उसके लिए फल भी ले जाते थे, और जो बिल्कुल व्यक्ति मरणासन्न था वो एकदम स्वस्थ हो गया। तो देखिए, ये जो बीज रूप में व्यक्ति के अंदर ये जो चीज़ें पड़ी रहती है ना, यही व्यक्ति को कितनी ऊंचाई तक ले जाती है। स्लम एरिया में उन्होंने डॉक्टर PM मेहता एक क्लिनिक शुरू किया, पुराना रेलवे स्टेशन था जामनगर का, वहाँ पे स्लम एरिया था। तो ये ही इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द यंगर जनरेशन। और फिर नानाजी देशमुख के साथ कितना अच्छा काम किया चित्रकूट के ग्रामोदय विश्वविद्यालय में। ये चीजें हैं देखिए। फिर वो वाइस चांसलर होके आते हैं और आज सर्वोच्च पद को वो सुशोभित कर रहे हैं विथ फुल डिवोशन एंड डेडिकेशन। और मैं समझता हूँ कि ये आयुर्वेद का स्वर्णिम अवसर है जो डॉक्टर कोटेचा जी की लीडरशिप विभाग को मिली है। मैं समझता हूँ डॉक्टर बलदेव सिंह धीमान जी मेरी विचार से सहमत होंगे। आपने जब धीमान साहब, आपने डॉक्टर बलदेव जी, आपने जब ये एक मुद्दा उठाया, मैं विषय पे आता हूँ, उसके पहले 2 मिनट इस पे भी प्रकाश डालना चाहूँगा। आपने कहा कि मॉडर्न साइंटिस्ट ड्रग मॉलिक्यूल पे काम कर रहे हैं, कल को ऐसा ना हो कि वो ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो एलोपैथी की बपौती बन जाए और हम ही उसको प्रिस्क्राइब करने के योग्य न समझे जाएं। हालांकि डॉक्टर कोटेचा जी ने कहा कि आई विल टेक एवरी केयर, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया उसको इतने अच्छे तरीके से डॉक्टर योगेश मिश्रा जी जब बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ सिद्धि प्राप्त है कि दूसरे का थॉट रीड कर लेना या अपना थॉट दूसरे के अंदर ट्रांसमिट कर देना। उन्होंने इतनी अच्छी बात करी जब वो डॉक्टर भूषण पटवर्धन जी के रेफरेंस में वो बात कर रहे थे भला तक वाली, कि भला तक के एक एल्कोलाइड पर उन्होंने काम किया और वो जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स थे वो सब मर गए। और तब उनको किसी वैद्य ने कहा कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन ए आइसोलेटेड एल्कलॉइड इट विल बी बेटर टू वर्क ऑन ड्रग एज ए होल। और फिर मुझे याद आया कि जब हम लोग सिनामोमम तमाल पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे डायबिटीज में,
तो हमने देखा कि सिनामोमम तमाल में एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन है जो हाइपोग्लाइसेमिक है और दूसरे 2 फ्रैक्शन ऐसे हैं जो हाइपरग्लाइसेमिक हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ही वहाँ बी फार्मा एम फार्मा कोर्सेज चलते हैं, तो वहाँ का एक प्रोफेसर हमारे प्रोफेसर एस एन त्रिपाठी जी के पास आया कि साहब मैं एक लड़के को इसी पे काम करा रहा हूँ और मैंने उस जो हाइपोग्लाइसेमिक फ्रैक्शन आप लोगों ने निकाला है मैंने उसकी टैबलेट बनवाई है और मैं चाहता हूँ कि कुछ पेशेंट में आप उसका क्लिनिकल ट्रायल कर दें। तो जब हम हाइपोग्लाइसेमिक फ्रैक्शन की टैबलेट को डायबिटिक पेशेंट में देख रहे थे तो हमने देखा कि ब्लड शुगर तो जल्दी नीचे आया लेकिन पेशेंट्स को ईचिंग होने लगी और जब तेज पत्र पाउडर एज ए होल दीजिए तो शुगर भी नीचे आ रहा था, कोई ईचिंग भी नहीं हो रही थी। तो जब आप पर्टिकुलर एल्कलॉइड आइसोलेट करेंगे यू मे गेट पोटेंट एक्शन बट यू मे ऑल्सो गेट अनवांटेड एक्शन। दैट इज द ड्रॉबैक विद वर्किंग ऑन ए पर्टिकुलर एल्कलॉइड। और वो चीज आपने सर्पगंधा में देखी कि जब लोगों ने रिसरपिन पे काम करना शुरू किया तो आज कोई रिसरपिन नहीं लिखता है क्योंकि रिसरपिन के अनेक एडवर्स इफेक्ट सामने आ गए, सुसाइडल टेंडेंसी, डिप्रेशन, लॉस ऑफ लिबिडो, जीआई ट्रैक्ट डिस्टर्बेंसेस वगैरह वगैरह। और वहीं आप सर्पगंधा एज ए होल देते हैं तो उतनी प्रॉब्लम उसमें नहीं होती है। तो रिसर्च के लिए ड्रग मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना इट इज अ नाइस थिंग बट व्हेन इट कम्स टू इट्स थेराप्यूटिक एप्लीकेशन इट इज बेटर टू यूज ड्रग एज ए होल। और मैं डॉक्टर योगेश मिश्रा जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ इस इशू में। गोस्वामी जी जो आपने सोसाइटी बेस्ड मैनेजमेंट फॉर कोविड-19 की बात करी, एक हिंदी में बहुत अच्छे राइटर हुए हैं जयशंकर प्रसाद और जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि व्यक्ति ही समाज का दर्पण है। समाज क्या है? आपसे हमसे मिलकर ही तो समाज बना है। तो अगर व्यक्ति सुधर जाएगा तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। जो इंडिविजुअल की चिकित्सा होगी वही सोसाइटी की चिकित्सा होगी। अब हम जब सोसाइटी की बात करते हैं उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और जवान भी हैं। तो गवर्नमेंट की तो गाइडलाइन आ गई है कि 10 साल से नीचे के लोग और 65 के ऊपर के लोग उनको जो है मोदी जी ने अपने सेकंड उद्बोधन में लक्ष्मण रेखा खींचने की बात कर दी थी 24 मार्च को जब वो बोले थे। तो इसलिए जो सीनियर सिटीजन एज वाला ग्रुप है और जो बिलो 10 वाला जो बच्चों वाला ग्रुप है, समाज में हमको ये बात अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करनी चाहिए प्रिंटेड मीडिया से, सोशल मीडिया से, कि भाई अगर बहुत आवश्यक नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए। सरकार ने जो है लॉकडाउन हटा लिया है लेकिन कोरोना वायरस ने लॉकडाउन नहीं हटाया, वो तो पकड़ ही लेगा। इसलिए अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो इट इज़ बेटर कि इस एज ग्रुप के लोग जो समाज में हैं वो इंडोर रहें और दूसरे लोग भी जो है वो बाहर तभी जाएं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और जाएं तो जो प्रोटोकॉल है मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। कल को जो है शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे, सिनेमा हॉल भी खुलेंगे, तो बेटर ये है कि न जाएं, अवॉइड करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो क्या ज़रूरत है कि आबेल मुझे मार प्रॉब्लम को जो है इनवाइट करने की। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर वॉक इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग इट इज़ बेटर, आपके घर में जगह है तो अपने घर में ही टहल लीजिए, छत पे टहल लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप वॉक पे जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है देखने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमको समाज में जो आयुर्वेद की हेल्दी डाइटेटिक्स है, आयुर्वेद की हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो है अभी डॉक्टर बघेल साहब जब डिजीज की इटियोपैथोजेनेसिस डिस्कस कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने प्रमेय चैप्टर के ऊपर जो वो श्लोक है यही खलु निदान दोष दूष्य वाली जो बात करी कि अब देखिए 85 to 90% केस में इस डिजीज में सभी लोग ठीक हो जाते हैं, खतरा जो है वो 10% का ही है। तो जहाँ ये दोष और दूषियों का कम्बिनेशन जो है वीक है वहाँ वो 85 to 90% वाले सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन जहाँ ये प्रॉब्लम ज़्यादा है वहाँ वो 10% के लिए जो है वो रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व है। जिनका इम्यून सिस्टम ठीक है वो इस प्रॉब्लम को जो है वो झेल लेते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है वो इसमें ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए टू टेक केयर ऑफ आवर इम्यून सिस्टम वी शुड प्रमोट हेल्दी डाइटेटिक्स, हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड नरिश डाइट, सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल, ये सब लोगों को जो है हम अवेयर करें ताकि वो इसके प्रति जो है लेने के लिए अपना मन बना के रखें। अभी डॉक्टर दिनेश कटोच जी जब आयुष काढ़ा की बात कर रहे थे, मैं देखता हूँ आई एम फ्रॉम देहरादून कि यहाँ आकाशवाणी देहरादून से रिपीटेडली जो है आयुष की गाइडलाइन को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है।
आयुष काढ़े को जो है रिकमेंड किया जा रहा है, जिसमें जो है आपका सोंठ है, काली मिर्च है और जो है तुलसी है। तो ये जो 4 चीज का जो है जो काढ़ा है, तो इसको जो है दालचीनी है, तो इसको बहुत रिकमेंड किया जा रहा है। गार्गल है, हल्दी पे इतना अच्छा। अभी मैं देख रहा था, एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर निस्तेश्वर जी, आजकल वो अमेरिका में ही हेल्ड अप हैं, तो उन्होंने कहीं किसी भारतीय समाचार पत्र का था वो, जिसमें वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ की है, वहाँ के एक सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च में कोई प्रोफेसर सक्सेना है, शैलेंद्र सक्सेना, और वहाँ के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर MLB भट्ट। इन लोगों ने कुछ 4 ड्रग पे काम किया, जिसमें अश्वगंधा, काली मिर्च और तुलसी और हल्दी और नीम, और स्पेशली हल्दी और नीम। हल्दी में कुरकुमीन और नीम का जो एल्केलॉइड था वो निम्बीन, इसके ऊपर उन्होंने काम किया। और उनका ये स्टडी है जो कि पब्लिश्ड भी है, it has been published in Springer Nature Journal of Viral Diseases, that this haldi and neem can restrict the virus attachment to the host cell receptor angiotensin 2, and it is more effective than hydroxychloroquine. तो ये जो साइंटिफिक स्टडी प्रोफेसर सक्सेना और प्रोफेसर भट्ट की है, ये बताता है कि जो आयुर्वेद की हर्ब है, इनको जो कोविड-19 में जो प्रमोट किया जा रहा है, इट हैज साइंटिफिक बेसिस। अभी डॉक्टर बघेल साहब ने इसी के रेफरेंस में कुछ एसोसिएटेड डिजीज बात करी और डायबिटीज की बात करी। अभी ये बहुत देखा गया है और बड़ा इसका प्रचार भी किया जा रहा है कि डायबिटीज के जो पेशेंट हैं वो बहुत केयर रखें, वो न निकले बाहर, उनको जो है कोरोना को लेकर के खतरा हो सकता है। अब इसका जो पब्लिकेशन है किंग्स कॉलेज लंदन में प्रोफेसर रूबिनो, उनका स्टडी ये है कि 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि अगर डायबिटिक पेशेंट को कोरोना हो गया तो उसमें मॉर्टेलिटी रेट हाई है। Hello, Chandola sir. Chandola sir, you are not audible or visible to us, sir. So I think your internet connection is giving some problems, sir. Sir. Can we shift to other speaker? Yeah, I'll just, okay. So I would like to request our next speaker, Professor B.K. Dwivedi sir. Sir is HOD of Department of Siddhant Darshan, Faculty of Ayurveda, IMS BHU. His topic of deliberation is basic concept to handle COVID-19 in long term through fundamental concept of Ayurveda. Professor B.K. Dwivedi sir. Professor B.K. Dwivedi sir. Is there? Professor B.K. Dwivedi sir. Okay, we'll move on to the next speaker. Professor Dr. K.K. Dwivedi sir. Sir is from Department of Kaya Chikitsa, State Ayurvedic PG College, Varanasi.
Sir's topic of discussion is mental stress management during pre and post exposure in COVID-19. Dr. K.K. Dwivedi, sir, please, sir. Thank you. Can you allow me for my screen the share the screen? Yes, I'll make you the host, sir. Yes. Can you hear me? Yes, sir. आदरणीय प्रोफेसर पीके गोस्वामी जी, धन्यवाद आपको, आपने हमें यह मौका दिया। हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर चंदोला जी, गुरुवर आचार्य बघेल जी, हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी हमारे प्रतिपालक, सबसे लास्ट में मुझे यह मौका मिला है। और स्ट्रेस जो स्क्रीन से हो रहा है, जो नेटवर्क से हो रहा है, Sir, I have made the host. उसको शेयर करते हुए, whether it is visible? No, sir, it is not visible yet. Okay. Yeah, yes, sir, it is visible. Visible? Yes, sir, visible, sir. Okay. Can you kindly make it the full screen? Yes, sir, it is made. It is full sir. screen? Yes, sir, full screen, sir. Thank you. डॉक्टर बीपी शर्मा जी, डॉक्टर खगेन, हमारे सभी वरिष्ठ, प्रोफेसर मिश्रा जी, जीएम गुप्ता सर, शर्मा जी, महेश जी, सभी लोग। मेरा विषय है मेंटल स्ट्रेस मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्री एंड पोस्ट एक्सपोजर इन कोविड-19। अभी तक हम लोग ये जान चुके हैं कि इस कोविड के साथ रहना है, हो सकता है कि जिंदगी के साथ ही हम लोग रहें। So the problem which we are feeling during these days and even in the coming days also, this stress is a very important factor which will be with us. Stress is an inevitable aspect of life. We are under stress every day, even for the last 1 and 2 hours also, because everyone was in a hurry, like me, to just finish my this paper or this talk. So without it, we would not move, think, get out of bed or care. So it is positive also and negative also. It is a non-specific response of the body to any demand or challenge. So stress is anything that threatens us, prods us, scares us, worries us, and thrills us. Who can be said as a mentally healthy person? Let us see. Hopefulness about opportunities and life challenges during these days of COVID season. I say we have 6 seasons. Shishri Vasant, Grishma, Varsha, Sharad, Hemant, but we have the 7th COVID season is there. So it is challenge, and we are going to make it into an opportunities. That is our aim. Who is persistent in achieving one's goals? What we have discussed in previous sessions about the goals by our respected Secretary Sir, Dr. D.C. Katosh Sir. Then who is practically realistic about goals as well as their strengths and weakness? We should know. Responsible for own personal behavior, respect own needs and needs of others also. This is also very important, which we are going to face in society. Then healthy self-esteem and positive self-concept, healthy self-confidence, ability to manage stress effectively, ability to work productively, and support of the network from the family to us and from us to family, friends, mentors, and the healthy attitude towards life's problems and difficulties. Seeks help, advice when needed. The person who has all this category, if he comes fit, he will be mentally healthy. I got one news just yesterday. कोरोना काल में आधे से ज्यादा लोग अवसादग्रस्त. It is an study by the Epidemiology International Journal, which was published on 15th April to 1 May.
and it was found that 51.6 persons are suffering with some type of depression. What were the features? That was the उत्साह में कमी, खुशी की अनुभूति न होना, निसहाय महसूस करना, नींद कम या ज्यादा आना, थकान या ऊर्जा की कमी, भूख कम या ज्यादा लगना, बुरा महसूस करना, जैसे ये सवाल पूछे गए और इस सवाल के आधार पे उनकी ग्रेडिंग की गई। कितने टाइप के स्ट्रेसर्स हम फेस कर रहे हैं इस काल में और आने वाले समय में। दैट वन इज द फिजिकल स्ट्रेसर, जैसे कि स्टर्नस एक्टिविटी शोज पॉजिटिव एटीट्यूड, वायरस, बैक्टीरिया, स्मोक, लैक ऑफ स्लीप, these are the negative stressors. Social stressors are receiving compliments by any work, for any work, that is positive stressor, and rejection, embarrassment, that is negative. Like that, intellectual stressors, challenging problems, if you are able to accept it, it is positive. If you are mentally fatigued, inability to comprehend, it means it is negative. So such type of emotional stressors, falling in love is positive, but when there is anger, lack of love, mistrust, that is negative. Likewise, spiritual stressors, the positive stressors are acting in accordance with your moral code. That is the positive stressor. And again, the negative is guilt, moral conflicts, lack of meaning or purpose in life. Other one is the environmental stressors, that is possession of a lot of money, that is positive. Then the negative is lack of money, shelter, food. So you see, stress is very important in our life. It may be positive, it may be negative. How we are going to convert it into positive way, that is important, which I want to say. That classification according to Ayurveda, Raja, Tama, Dushan, Janya, there are some bhavas, that is Kam, Krodh, Lobh, Moh, Irsha, etc. And these are the integral part of our life. It will be there. But if it will not be there, it means it is again the negative stressor. It is necessary to go through that. So how we are going to convert it into positive way, that is important. The another classification about the Manodahic Vikar, that is psychosomatic. Like a person suffering with a disease like Amvat, Tamakaswas, is also getting secondarily depression or some mental psychological problem. Then again, some diseases are due to the mental stressors like Amlapitta, Parnamashula, even Tamakaswas and Amvat. They are vice versa, they are presenting their features. And that is due to stress which we are facing nowadays. Then we talk about the Sattva. Sattva Bala Pariksha, Manobala Pariksha. If anyone has proper Sattva, that means it has a Uttam Manobal. He is a good person. But if anyone has a Madhyam Sattva or Madhyam Manobal, or our Sattva or Heen Manobal, we have to improve accordingly by counseling and other things. Astat Ben Devar Sanyo, Pragya Parad Parinamas-Cheti, Rest Trividik Vikalpa Hetavo Vikaranam. The causative factor of all these diseases are this one, and in this case, Pragya Parad is important. Dhidriti Smriti Vibhransha, Karma Yat Kurtya Shubham, Pragya Paradham Tam Vidyat Sarvadosha Prakopanam. When we are going to talk about the Unmad chapter, Tayaralpa Sattvasya Malah Pradushta Buddhir Nivasham Hridayam Pradushya, means that person will be afflicted who have Alpa Sattva, just it is an indicator of that. We have a type of Chikitsa, that is Devastra, Yuktipastra and Sattva. We start with the Sattva because the third one is more important for me. Sattva Avajay, Punah Aitebhyo Arthebhyo Mano Nigraha. The Charak says, and Manaso Jnana Vijnana Dhairya Smriti Samadhi, as Dr. Mahesh spoke about that. And Dhi Dhairya Atmadi Vijnanam Mano Aushadham Param. So that Dhi Dhairya Atmadi Vijnanam, that is very important to retain. Psychological and psychodynamic methods to divert the psyche of an individual
from unwholesome objects towards wholesome objects. So this is a situation which we have to divert it into the wholesome condition. That is our aim. That treatment produces by which Dhi, Dhriti and Smriti come into normalcy. We have to talk about that. We have to work on that. The measure like Jnana, knowledge, that is Vijnana, specific knowledge, Dhairya, Smriti and Samadhi, that Charak says. Then little bit components of Saptavaja, which is very important for us because we are an Ayurvedic people. What are the components? That one is the assurance. Then the replacement of emotions, regulation of thought process, referring of ideas, channelization of presumptions, correction of objectives and ideals, guidance and advice for taking decisions, control of patience, fear of psychoshock therapy. So this is the work which we can do. And we can, by these methods, we can go through the, to combat the stress. In reference to the Sadavritta, Charak states that those who follows the rule of Sadavritta lives for disease-free 100 years. That may be Vayaktik Sadavritta, that is personal conduct, that may be Manasik Sadavritta, that may be Charitrik Sadavritta, that is Samajik Sadavritta, that is Dharmik Sadavritta, and ultimately Naitik Sadavritta. All these are the conduct which we have to practice. Our Sadavritta chapter says a lot of things regarding that. Then Dharani Vega, Sahas, Lobh, Shok, Bhay, we have to retain it. Krodh, Ahamkar, these are the conditions of this viral season, this COVID. Then Achar Rasayan means the social and personal conduct by which one can acquire the Rasayana effect. It broadly includes personal behavior, social behavior, and sattvic diet. What is sattvic diet? That is pure, what we are talking about that, these things, pure, fresh, light, sweet. Dr. Chandola narrated all these things, wheat, moong, etc. So we have to follow the rule of the sattvic diet. It is a indication from the Mahabharata. Then the Rajasic food, what it causes, it aggravates Vata and Pitta, causes hyperacidity, restlessness, irritability, insomnia, increases toxin, all these things. So we have to keep it in mind that we have to avoid the Rajasic diet. Then also Tamasic diet, it causes rigidity, lethargy, excessive sleep, absence of intellect, and accumulates kapha and waste products. So try to avoid it. Then Ashtanga Yoga, about the Yama and Niyam, about the asanas, practice pranayama, and ultimately we can go for that. Then we have Dr. Mahesh Vyas has entered the waiting room for this meeting. Please admit. That mental, think positive thoughts. Think of our strength, your strength. Think about things you have done well. हमने जो बढ़िया किया है उसके बारे में सोचें और अपने स्ट्रेंथ को इंप्रूव करें. ऑर्गेनाइज योर टाइम, हम अपने समय का कैसे उपयोग कर सकते हैं इसके बारे में ध्यान दें. बहुत से लोग बेरोजगार हैं, हम कैसे दूसरा अल्टरनेटिव सोच सकते हैं इसके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है. देन फिजिकल, मेंटेन योर हेल्थ बाय एक्सरसाइज, बाय ईटिंग नरिशिंग डाइट and by getting enough sleep, and learn to relax. Learn to relaxation exercise to release muscular tension. Take up a hobby and have a warm bath. Listen to calming music. Then value yourself. Don't blame yourself needlessly when things don't go well. Figure out what you can learn from your mistakes. Plan and think ahead. करना क्या है आगे? हो सकता है हमारी नौकरी छूट गई हो, हम छोटे मोटे रोजगार कर रहे हो, हमको उन्हें काउंसिल करना है, उन्हें एक नई दिशा देनी है. Then express your feelings. Laugh when you feel good, like Dr. Chandola, and hug your family and friends. Let yourself cry when you are feeling sad and reach out to comfort others. Then we have social, communicate with people. Say something nice to someone. Discuss your problems with someone. अभी पता लगा आपके किसी बहुत से लोगों ने सुसाइड कर लिया. Why it is so? Because they are not in the contact of society. They are friends.
Seek new activities, pursue new hobbies, plan something fun and exciting. Spend time with someone who is calm and reassuring. Don't be alone. Then habits, we have to change the habits. Care for yourself. Well-balanced diet, regular exercise, adequate sleep. Decrease intake of caffeine, intake of junk food, and balance between the school, between the work, with the leisure time, and build a support system of people with whom you can talk freely. Seek out activities and situations which affirm your strengths. Then change your stressful situations. How? Communicate your needs and concerns with assertion. Then change about your thinking also. Look at things more positively. See problems as opportunities. This is the time when we have to see all the challenges in opportunities. Be realistic in your expectations. Refute negative thoughts. Keep a sense of humor. Then learn how to replace the alarm response with the relaxation response. Sometimes you get the problem. Take a deep breath when you get bad news. Count to 10 before responding. Write down your thoughts or talk to someone. Give yourself time to react. This we can do. Why this problem is coming? Yeah. This, why not? This, my slide is not going. Anyone can help me? Sir, kindly check once. Because of internet problem, it may be, sir. Security, anyone can help me? New share. Again, I want to share number. 1 minute, just please. Oh no, just. You are screen sharing. Screen sharing. By just it is all these things in. Yeah, just I go to the, yeah, we can use some drugs. It is also explained by other speakers also, like St. Madhugurchi, Mandukparni, Sankuspi, Ashwagandha, Kapikachu, Jatamansi, according to the need. And because my time is over, I want to conclude my session. Always try to represent yourself as happy. Initially, it becomes your look. Gradually, it becomes your habit. And finally, it becomes your personality. So with the quote of this Sri Vivekananda, I want to conclude my talk. A lot of thanks to all for giving me this opportunity. Thanks to all. Thank you. Thank you so much, KK Dwivedi, sir. Thank you so much, sir. I would now like to request Professor BK Dwivedi, sir, Head of the Department of Siddhant Darshan, to kindly deliver his lecture on basic concept to handle COVID-19 in long term through fundamental concept of Ayurveda. Professor BK Dwivedi, sir. Yes, sir. हाँ सर, आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज भी पहुंच रही है, आप देख भी रहे हो सर? हाँ सर, आवाज पहुंच रही है सर। आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, जी सर। नमस्कार। यस सर। सभी गुरुजनों को नमस्कार, सभी मित्रों को नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कोविड के बारे में, जो
पिछले 3 महीने हेलो सर। सर यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा लो दिखा रहा है सर। द्विवेदी सर, हेलो। बीके द्विवेदी सर। I would like to request everyone to kindly wait for a few minutes. We are trying to connect with BK Dwivedi sir. I think Dr. BP Sharma can start. After that, we will listen because he's trying to connect. Dr. BP Dwivedi is trying to connect. Please, I think Dr. BP Sharma may start. Okay, sir. Okay, sir. I would now like to request Professor BP Sharma, sir, Principal, Government Ayurvedic College, Guwahati, to deliver his lecture on efforts made by state government to handle COVID-19 through Ayurveda. Professor BP Sharma, sir, please, sir. Hello. Yes, sir. Can you hear my voice? Audible? Yes, sir. Yes, sir. You're audible. You're visible also, sir. Okay. Okay then. Thank you very much. Honorable Secretary, Government of India, Department of Ayush, respected Director General CCRS, distinguished guests, ladies and gentlemen, Professor Sandolaji, Professor Bagelji, and Professor Dr. Goswami, Director. Thank you, Dr. Goswami, for organizing such a beautiful webinar seminar. Ayurveda is the science of life which deals with all those aspects which are related to life. The main aim of Ayurveda is to preserve positive health in healthy and afford relief from the disease in sick. That means Ayurveda have two aspects, preventive aspect and curative aspect. Ayurveda has given more stress on preventive aspect than the curative aspect. And for that, we have one therapy that is known as Roshan therapy. Roshan therapy means use of some herbs and follow the rules and regulations for maintaining the health. Beauty is this, that these herbs can be used as a preventive aspect and as a curative aspect. So this COVID-19 is a pandemic, and in Assam also we have now 4,320 people
have this corona positive. So how we can treat such type of cases and how we can prevent people not to occur such type of diseases. I told already that we have herbs. Beauty is that these herbs can be used if you have no disease also. For example, Amlokhi, you know, Amlokhi, Linnaeus Pauling, on his research work, he showed that if a person consumes more vitamin C, then he can keep his body free from various viral diseases and lifespan is also increases. For vitamin C, we have Amlokhi, lots of available all over the India. We have Amlokhi in the form of capsule, in the form of tablet, in the form of powder, in the form of syrup, soros, it is available. This can be used from pediatrics to geriatrics. For COVID patient also, we can prescribe, or as a preventive also, we can ask the people, yes, please consume Amla soros, Amla capsule, Amla tablet, whatever is available in your place, Next, you see Tinospora cordifolia gurusi. It is available freely in the northeastern region. And I delivered lecture through different media channels. Yes, please consume this Tinospora cordifolia gurusi as a juice, or in the market it is available in the tablet form, in the syrup form, in the powder form. Please consume from pediatrics to geriatric. Everybody can consume. And COVID patient also, they can also consume. This viral load will be comes down and there will be prevention will be there not to occur this complication. Again, along with this, we have to follow the rules and regulations, whatever government has given. For example, social distance maintained, we have to follow. We have to clean our hands frequently, and we have to wear masks. That is most essential. Along with, we can do yogasana also. Yogasana, if you are not regularly doing, then not required to do. You do only pranayam. Along with other herbs, what will consume? You have to consume tulsi. One quart is available that is prepared from this adrak, sunthi, tulsi, dalchini, and golmoris. We are trying to give this quart, Ayush quart, to our patient. Within short period, patient will be available at Guwahati Ayurvedic Hospital. We are trying to give this Gurusi tablet along with tulsi and along with this quart. If we get permission from the government, we have already applied. We talk with our Ayush director. When patient will come, when he will give the permission, then we can give this quart. If any complication arises, we can use pasok. We can give Albizia livet. This we can use if respiratory disorder or respiratory problem is occur. For that, I told that series we can use. It is freely available in northeastern region. Pasok we can apply, and Jostimodu we can prescribe. If the patient or normal person also, they can consume this thing as a preventive aspect also, if they have no any respiratory disorder. Along with, lastly, we are ask the patient, not only patient, general public also, please consume ashwagandha powder, ashwagandha tablet, whatever is available. And people are in our northeastern region, people are consuming this tulsi, gurusi, ashwagandha daily, this normal person also, and some COVID patient also, they are consuming as a Ayurvedic drugs. And this quart and this Ayurvedic medicine, we are going to give after getting this permission
permission. This is things from my side, what type of this herbal medicine they have to consume. And future also, future strategy means they have to follow the rules and regulation regarding wearing of masks, regarding hand wash. This they have to follow. With this, I conclude my lecture. Thank you to all. Thank you so much, sir, for your speech. Thank you so much, sir, and giving your time also. Thank you so much, sir. Okay, thank you. Now, moving on with the next agenda for today, we have representatives from Vishwa-Ayurveda-Parishad Northeast region. So the first representative will be from Meghalaya. We have Lamin sir amidst us. I would like to request Dr. Lamin sir. He is working in the health department in Meghalaya. I would like to request Lamin sir to kindly deliver his speech regarding the initiatives taken by the government of Meghalaya in a very short way for 3 minutes. Sir, please, Lamin sir. Yeah, he had joined. I had messaged him also. Lamin sir, you're kindly requested to unmute yourself. Lamin sir. Okay. We'll move on with the next state, Assam. I would like to request, I would like to request Dr. Nitin Burman sir, being a representative from VAP, Assam. Hello. Dr. Nitin Burman sir, yes sir. Yeah, I'm present here. Yes sir. Respected all the dignitaries from the Ministry of Ayush, all the learned teachers of Ayurveda, and all the members of National Committees of Vishwa-Ayurveda-Parishad. Myself, Dr. Nitin Burman, Associate Professor of Government Ayurvedic College, Guwahati, and Treasurer of VAP Assam chapter. Respected sir, the Vishwa-Ayurveda-Parishad Assam chapter was established in Assam in the year 2016 in presence of Professor Dr. K.K. Dwivedi sir. He came here in our college, and on that day, the Assam chapter of VAP was get birth. And we're taking some teachers of Government Ayurvedic College as member. And presently, near about we are having 100 numbers of members, including PG and UG students. And in the last 4 years, since its inception, basically on the banner of VAP, we were conducting only that pre-PG entrance examination, which is known as Lakshya. And after that, we have conducted some training program for our UG and PG students in Sanskrit language. But in the year 2019, December, we have conducted one seminar on research methodology and biostatistics, inviting a resource person from different parts of the country, even from the United States of America, IIT Guwahati, JNU Delhi. And in that seminar, Dr. Srivaditya Thakur sir was present as our Northeast convener. And from that time, that actually the VAP Assam chapter had gets its pace. Recently, during the early period of your COVID outbreak, in the month of April, we have arranged one online meeting in presence of all the participants from Northeastern regions, in presence of Dr. Srivaditya Thakur sir, then our beloved director sir of NEIAH, Goswami sir, then our principal sir. And we have vividly discussed the issues, how we should combat with the situation or coming situation, because at that time there was very few numbers of cases in Assam, and most of the states of our Northeastern region were free from the diseases.
but scenery was totally different in that time. In last 2 months, the scenery is altered now, and it is now a alarming situation. So even we are with the teachers of our colleges also are very much busy with your COVID related issues in our college. So under the banner of VAP, we could not do that much, but we are happy to inform you all that with the collaboration of our Teachers Association of Government Ayurvedic College, we have prepared that Ayush Squad, which is around more than 1,500 packets. All the ingredients were collected locally, all were organic products, and we have started to distribute it among our various officials, government officials. Though from government side, we are trying to get the permissions to distribute it among the patients and even the frontline workers like police personnel or health workers, because as we inform you that our college hospital is already converted to COVID hospital, and within a short time, means today or tomorrow itself, the patients are going to be admitted here. So we have lots of opportunities. If the government give the permissions to us, then we can apply the medicine to the patients also, because we have enough number of these Ayush cards along with us. Apart from that, from VAP side, we are planning to make some committees in the district levels, including our Ayush doctors, because in Assam, more than 1,500 doctors are working, and all doctors are working with COVID-related issues, either in quarantine center or screening center or in your COVID isolation center. So if we could include them also by this, forming some your district level committees, then we can proceed for the fight against the coronavirus, COVID-19. Along with that, we, our secretary, Professor Dr. Hogan Basumatari, along with him also, we have discussed that we can arrange some your awareness program in the local societies, along with whatever do's and don'ts, then how to hand washing and all these things we can carry out. And Sivadetta Thakur sir is there. Always he is encouraging us and giving suggestions. Then Pradip Goswami sir is there from Shillong. He is also giving interest. And our principal sir, Professor Dr. B.P. Sharma sir, he is always encouraging us. So in presence of our suggestion of all of them, we hope that we will fight against these issues, against this your war against COVID-19, and we will win definitely. So thank you all of you. Thanks. Thank you, Nitin sir. So from Manipur, we have Dr. Rita. Rita ma'am, are you there? She's from Mizoram, sir. Next. We have from Manipur, Dr. Rita. Okay, I would like to request Dr. Kimi from Mizoram. Dr. Kimi? Yeah, hello. Yeah, hello. You're audible. You're visible also. Okay. Good evening to all respected dignitaries. Myself, Dr. Kimi Ralte from Mizoram, presently working as medical officer in Civil Hospital Aizawl. So first of all, I want to highlight COVID cases in Mizoram. Presently, active cases are 120, and one has recovered so far. And the recovery rate is very low, as we know. Only 1% recovered so far. And the duration of treatment of this recovered patient is also very lengthy. So far, like on almost 2 months, it takes almost 2 months. And right now we have 120 active cases. And like from Ayush Directorate, we have more than 80 doctors in the front line
like some are posted in the border areas, because Mizoram have many border areas, like border with Assam, Tripura, and all those things. So like many, like more than 80 doctors have been posted so far. And like in case of what to say, like what intervention we had done so far is more than 50. We had distributed prophylaxis that consists of Chyawanprash and Ars album from homeopathy, from homeopathic side. We had distributed so far to more than 50,000 people. That includes mainly the quarantine centers and government offices. So like a proposal has also been made to government, to like Mizoram government, to include Ayush medicine in the treatment protocol for COVID. But unfortunately, our proposal has been declined. So as for now, what we are mainly doing is like we distributed the Ayush medicine for the prophylaxis, mainly the Chyawanprash and Ars album, to quarantine centers and to all the government officials. And like in case of Ayurveda, what I want to mention is like in Mizoram, compared to other Northeast states, we are lacking behind so many things, because we have till now we are only 15 doctors from Ayurveda, and the pioneer of Ayurveda in Mizoram are mostly from homeopathy. So only 5 doctors are in the mainstream now. So in Ayurvedic line, we are trying our best, but what to say, like what to say, we don't have much platform and opportunity for Ayurvedic doctor as compared to other states, but still we are trying our best. And for like many what to say, traditional practitioner, like here in Mizoram, they are also very interested, and they also wanted to try. They also know this guduchi and these traditional herbs. It's also available in Mizoram. Like they also wanted to practice and try and use as quat or powder or something like that. But we don't have much awareness in case of using these traditional herbs in Mizoram. Still the practitioners are there, but we don't know how to use, or we don't due to lack of awareness, we are not practicing much. But still from Ayush Directorate, we are trying our best to educate and to spread the awareness how to use these traditional herbs and how to make use of that what to say, that protocol which are highlighted by Ayush Ministry, like quat, like using this Nasyapan and all. So we are trying our best. Hopefully we will succeed, or we will at least achieve something from this, from our effort. Thank you so much. That's all I can say. Thank you, Kimi. Thank you so much. I would now like to request Dr. Rita Thaunauzam from Manipur. Rita, ma'am. Yes, can you hear me? Yes, ma'am. You're visible as well as audible, ma'am. Okay. Good evening, everybody. Respected Sir Katoja ji, Honorable Secretary, Ministry of Ayush, respected Sir P.K. Pathak, Additional Honorable Secretary, and respected Sir Goswami ji, and all the respected invitees and all the gurus present here. Actually, as we regarding the AVP Vishwa-Ayurveda-Parishad, Manipur is also in budding stage. Most of the doctors
are, as said by our colleague, in our Manipur state also, most of the doctors in this one in high departmented posts are homeopathic, and we are only 6 doctors in state directorate of Ayush, and another are absorbed in NRISM. So now I just want to share the figure of our this one COVID related figure till yesterday. So we have a total number of 507 positive cases, and recover is 151, and active cases is 356 till yesterday night. And actually these all cases are returned from outside state. So we have more burden in days as well as in this one manpower also. So most of the Ayush this one NRISM doctors and Ayush doctors and paramedical staffs, we all are engaged in this one screening center, and we are giving duty in quarantine center also. And I'm myself are doing quarantine in charge posted in MU quarantine center. But till apart from the topic means this one management intervention in this one COVID-19 cases, till we don't have any order that we are allowed to give medicine in the quarantine center. But we have already, our department have already started awareness program in TV channels about this Ayurveda immunity boosting guidelines, and also published in local newspaper. And we have given awareness program to CBI Academy head office in Manipur, and we have also distributed Chawanprash Samsamani Vati to all as home, and we have given this CBI staffs and their families Chawanprash free of cost, and Samsamani Vati also. And we have started this hoarding of Ayush immunity guideline based on Ayurveda on main roads and in institute area. We have lack of manpower in department. We don't have any higher posts in the department also, and it's under this National Medicinal Plan Board. I was one of the expert team, and yesterday we have launched this one Ayush Immunity Plus, which comprises of amalki, haridra, turmeric, and this one ginger in the ratio of 3 to amalki 3, and haridra and ginger 1:1. We have launched this Ayush Immune Plus as a food supplement for general public in presence of our health minister. Yesterday we have launched. And main problem I just want to share with our senior sirs and our honorable sir Rajesh Katoja ji, that it will be it is the high time that since we are doing our duty in quarantine center, it will be more, it's our prevalence that if we are allowed to give Ayush medicine for prevention as well as this curative process. But since we don't have any order or this one, any guidelines not given from the state authority, so we are not allowed to give any medicine. But I have started giving at least Chawanprash and Samsamani to our staffs, Ayush staff, those who are doing this posted in the screening center, as well as those who are in quarantine center. But it will be better if we get permission to give all this Ayush medicine. We are giving this homeopathic medicine arsenic album as well as Chawanprash to general public, but we don't have any authorized order to give to the this inmates quarantinees who are staying in the quarantine center. But it will be more privileged, and it is high time if we have the chance to give this medicine to this inmates in the quarantine center. So my humble request is, if our sir in the center higher authority, they have give more emphasis to state director of Ayush about this method, it will be more grateful for us. Thank you, sir.
Sorry. Thank you so much, Rita ma'am, for sharing your thoughts with us. Thank you, ma'am. I would now like to request Dr. Inya Lingu sir. He's a Deputy Director, Department of Ayush from Arunachal Pradesh. Dr. Inya Lingu sir. Thank you, Sika. Yes. So, my most respected teachers, Chandola sir, Bagel sir, Maheshwar sir, P.K. Goswami sir, B.P. Sharma sir, I pronounce to you all and all the dignitaries of today's webinar. Today, really, I feel I'm blessed to see all my teachers once again after so long time. I feel very lucky today. So, sir, now I would like to highlight some activities we have done in Arunachal Pradesh on behalf of Ayush. The Ayush branch, we don't have separate directorate here. We are still under Directorate of Health Services. So whatever the Ayush branch we have done in Arunachal Pradesh, I like to highlight. Before going for that, I would like to give the status of COVID-19 update the COVID-19 status of Arunachal Pradesh. Till today, we have 95 positive cases. And all are, it is very surprising that all are asymptomatic. All the patients, those who all are admitted in COVID hospitals, they all are asymptomatic, and 7 of them have been discharged as they have been fully cured after 3 times test. So this is the COVID status, and since April, we have been doing some activities as per the guidelines of the Ministry of Ayush. We have imparted trainings to all the Ayush doctors, the state, especially for the COVID-19, this one crisis, as per the guideline of the Ayush Ministry. We have imparted trainings to all the doctors, all the Ayush doctors, then even private practitioners also. We have given the training for management of COVID-19. Then we have a panel discussion in Doordarshan also in Itanagar. I have personally attended that. As we have a talk about the COVID-19 and its management in Ayush system, and as per the guidelines of Ministry of Ayush. Then we have requested all the practitioners, as the secretary sir already he said for this one, this Sanjeevani Ayush Sanjeevani app. We have requested all the doctors in all around the Ayush doctors in Arunachal to download the Ayush Sanjeevani app. Then we have supplied some medicines which we have prepared in our own pharmacy. We have a government Ayurvedic pharmacy in our state. Not that large, but a small one. We have prepared Patyadikwat, then some Samanivati, Haridra Churan, and Ashwagandha Churan, and we have supplied to all the districts of Arunachal Pradesh. And really, people, they are very receptive about this immunity booster medicines, preparations, I mean. So, and now many more are demanding for more and more immunity boosters, but unfortunately, due to fund crisis, the crisis of fund, we couldn't prepare so much of immunity booster, which is sufficient for total population. But especially in the hospitals, especially for frontline workers, we have supplied all these immunity boosters. As we have got a fund, little bit of fund from our honorable, from the CMRF, Chief Minister Relief Fund. So with that little limited fund, we could prepare and collected all the raw materials, especially this Haridra Haldi. It is abundantly available in Arunachal Pradesh. So we have prepared for, especially we have given more emphasis on golden milk, because this is the only raw material we are getting abundantly here. Rest, some of the raw materials we have to get it from outside states, because like Ashwagandha, then all other ingredients of Patyadikwat and all, we have to get it from outside.
So these are some of the things, some of the activities we have done. I'm really thankful today to all the resource persons, especially the host, NEIAH Shillong and Vishwa-Ayurveda-Parishad. Though you have included us as a representative of Vishwa-Ayurveda-Parishad, but still we have not officially joined. So, sir, I would like to request you to kindly, especially Northeast, except Assam, I think in other states we have not joined officially. So it will be better so that we can do more work together in the government sector and with in collaboration with the Vishwa-Ayurveda-Parishad. In this few words, I would once again I would like to thank Goswami sir for inviting me in this, and Dr. Shika also, and all the stalwarts of Vishwa-Ayurveda-Parishad, and my pronouns to all my teachers. Thank you. Thank you so much, Ringu sir. I would now like to request Dr. Ratan Bhaumik. He is from Tripura. Dr. Ratan Bhaumik, sir. Yes. Yes, sir. Yes. You're audible as well as you're visible, sir. Okay. Namaskar. Good evening. I am from Tripura, Dr. Ratan Bhaumik. Actually, all doctors are now busy with the COVID-19 program. So there is so much difficult to actually to join this program, but I request Dr. Lekha Shikha to give me the opportunity at 6 p.m. Thank you, Dr. Shikha. Now I like to express the latest position of Tripura regarding COVID. Total number of patients in our state 1089 are suffering from COVID positive, and 433 people are already recovered from their disease. And we, the people of NHM and including our state regular doctors, all are now continue to support with the COVID-19 mainstream. So now we are request our government to give me a chance to Ayurvedic fraternity. As per guideline of Ayush, Minister of Ayush, they are given so many guidelines to give an immune booster to the COVID patient. So after that, our government association, Tripura Ayurvedic Doctors Association, requested our government to give a chance to give some Ayush card to the common people for a immune booster. So yesterday we organized a campaign in our state Ayurvedic hospital, and near about 500 patients, we supply a quath packet, dry packet, and advise them to make a card and take it for the immune booster dose. And we are thinking again, and we already discussed with our government to supply Sangshamani Boti and others medicine which are prescribed by the government of central government, Ayush Ministry. Government assured us to scope to distribute that type of medicine to the patient, and we are trying our best level. On that few lines, I conclude my speak. Thank you very much to all of you. Thank you so much, sir. Thank you.
I would now like to request Dr. Sumita from Meghalaya to kindly share her experience. Dr. Sumita. Good evening, all the important dignitaries. And also I would like personally thank you to NEIAH and to the director who's given us an opportunity to be able to interact in this manner. So I would like to personally thank him. And also as during the initial when Sir Goswami was talking about, he's been trying to penetrate into the system, into the government system, into the quarantine, to be able to give the medicines in the quarantine centers. So that's the same issue that we are facing. As of the government of Meghalaya has been able to give us medicines to be able to combat COVID-19, but the issue is we are finding it difficult to implement at the field level. And also I would like to this is actually a very good opportunity where I'm seeing as personally as where we have been able to break the barrier between the allopathic doctors and the Ayush doctors, because right now the kind of work that the Ayush doctors are doing is amazing. I just want to update, and also maybe we don't have the other doctors here, the young doctors, but I would like to, through this media, I want to thank each and every RBSK doctors who's been on the field, been doing sample testing among the community, especially my district, and also the NHM doctors who's been, leaving the families and been there for the screening, for the interstate screening of the general public. And also, yes, and I think they're doing a very good job. And again, I would like to request that in some way that since we have the medicines, how do we go about distributing these medicines at the centers to prove that Ayurveda is an evidence-based medicine and not just a complementary medicine, but it is a science in itself. So thank you. Thank you so much, ma'am. I would now like to request Dr. Imli Kumba. He'll be representing Nagaland. Dr. Imli Kumba. Good evening, everyone. Respected seniors, doctors, sirs. Actually, I was a little bit late. Sorry for that. I guess I'm all audible, right? Hello? Yeah, you're audible, you're visible also. Okay. As of now, the state of Nagaland, 179 cases has been confirmed till date, and 92 has been already COVID-free, and only 87 cases are actually positive now. So the recovery rate is very high. As of the state of Nagaland, we are having only 21 doctors who belong to the field of Ayurveda. And yes, it's a very less number, but whatever we can do, we are doing it from our side. And also there is a regional center of Ayurveda in Dimapur, which is taking up the study on as prospective non-randomized open label controlled interventional study by using Guduchi Ghanavati and Sudarshana Ghanavati among containment zone population. So they have already started the study, and they have taken it for 1,500 patients. It's a non-randomized, divided into two groups, which is already started, and very soon they will be compiling the data. Also, all the members of NHM and RBSK staffs, they are doing a very good work. Also, it is very helpful that a 30-bedded Ayush hospital
integrated Ayush hospital has been converted into a isolation ward with all the facilities, and most of the quarantine and isolation ward are being manned by Ayurveda doctors. Though the number is very less, but whatever we can, we are doing it from our side. Also, we are also propagating our science through various social media and also through YouTube videos, exploring our benefits and also sharing it with our public. So these are all the works which we are taking up. I would like to thank NEIAH and also Goswami sir for giving me an opportunity to speak, and also to my friend Shika Lekaru, who is taking all the burdens and then doing this, and also to all who are present in the meeting. My regards, Jai Ayurveda. Thank you so much, Imli. Thank you. I would like to request Chandola sir, as because of internet connectivity, we were not being able to hear him properly till the end. So I would like to request Chandola sir again to kindly give his speech for us and enlighten us with his speech. Chandola sir. Thank you very much. Actually, some of the points which I could not complete because of the net connectivity problem. Very Yes, sir. correctly, Dr. Mahesh Vyas and Dr. K.K. Dwivedi mentioned the problem of depression in these COVID-19 patients. Recent news yesterday I was listening in the radio was that most of the patients of COVID-19 are suffering with anxiety and depression. So society is facing a lot of problem on these two issues. If you remember, in the very beginning, when a lady from America returned with her son, they were in quarantine in Delhi hospital, and the son, whose report for corona was awaited, he jumped from 5th floor and committed suicide. Even in Dehradun, 2-3 days before, in quarantine center, one person, young man, he committed suicide by hanging himself. So the problem of depression is very common in the society, especially who are in quarantine or who have been reported to have positive. So studies have been done. When a person is under stress, the blood samples are collected, and it is seen that the level of immunoglobulin goes down. When you are in deep meditation, again blood samples are collected and the level of immunoglobulin goes up. So our immune system has variation depending upon our mental condition. If we are under the influence of negative mental attitude, immune system is lower. If we have positive mental attitude, the immune system is up. So that makes our system susceptible for disease condition. So here care is to be taken that the society at large should be advised to go for practice of yogasan, pranayam, and meditation. For relaxation, shavasana is the best thing. So I was listening in the Akashvani news today that Ministry of Ayush and Prasar Bharati, they have some signed protocol, and daily from 8 a.m. to 8:30 a.m. on DD Bharati channel, this yoga program will be there. So people can see and practice these various yogic postures, pranayam technique, and meditation technique, and they can practice to lessen the susceptibility for these depressive illness. Lot of work is done on garlic, lasun. It's a very good antidepressant. So this lasun intake can be encouraged to the people. They should have positive attitude. Recent research has also shown that these patients have reported to have involvement of the nervous system.
and that's why they have headache, giddiness, muscle ache, and loss of taste and smell also. Even because of the less concentration of oxygen in the body, the clots are formed and chances for stroke are more. So these persons can be encouraged to have pranayam and this kapal bhati type of thing, so that brain gets maximum oxygenation. I would talking about those things, the British study that 20 to 30% who were admitted in the hospital, they died because they had diabetes. Now the scientist says that the mortality is high in those corona patients who are already suffering with diabetes. The second issue is that coronavirus can create diabetes in healthy individuals. They say that not necessarily it is type 1 or type 2. Even some other type of diabetes can also be developed because of this. So to the people in the society, we can encourage them to have positive mental attitude, avoid negativity. ग्लास जिसमें आधा पानी है उसको आधा फुल देखें, आधा खाली ना देखें. और जितने भी हमारी रसायन ड्रग्स है, तुलसी का प्रयोग है, हल्दी का प्रयोग है, ये करें, then they will be able to cope up with the situation. एक शेर के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि देख यूं वक्त की दहलीज से टकरा के न गिर, देख यूं वक्त की दहलीज से टकरा के न गिर, रास्ते बंद नहीं सोचने वालों के लिए. हर रात के बाद उजाला होता है, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद सुबह होती है. इतना बड़ा भूकंप आया कच्छ भुज में 2001 में, आज नया भुज खड़ा हो गया. आशावादी होना चाहिए, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए. मैं समझता हूँ if we are able to develop this philosophy, then we can lead to have a healthy and happy life. Thank you very much, Dr. Goswami. I hope and I wish कि आपकी एक्टिव डायनेमिक एनर्जेटिक लीडरशिप में नॉर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी सफलता की बुलंदियों को स्पर्श करे. गॉड ब्लेस दिस इंस्टीट्यूट, गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन. सर आपका आशीर्वाद है. Thank you so much, Sandola sir. Thank you so much, sir. So, coming to an end of today's scheduled webinar, I would like to request Professor Dr. Khogen Bosumtari sir. Yes. Am I audible? Am I audible? Yeah, you're yes. audible. So, one second, sir. Just a minute. Hello, good evening. Dr. Mahesh, Professor Bess. Professor Mahesh. Yes, sir. Hello. Yes, Mahesh, sir. Yes, sir. Actually, we are come to almost end. Okay. So my question is that we have made a very good deliberations. So our young generation is facing certain problem in a different northeastern states. So from my request is that from Vishwa-Ayurveda-Parishad, you can take certain actions, that means follow-up actions, because they are dedicated for Ayurveda, but we should have to take care of this, particularly their livelihood, because they are highly qualified. Yeah. They are properly trained in undergraduate, postgraduate levels. So actually, it is not our purview, but personally, which I have been working last 5 years, they are very energetic. If we are going to expanding our network, because now we are quite developed in Guwahati, then owners also doing well. But still, when we are going to reaching the other states, we should have to make a very concrete efforts. So my humble request to you that you are in Delhi and you are in constant part of the luminaries. So let us have something. I am not going to discuss it, but we may have to conclusion today. Sibadatta ji also is there, Bhargav ji also is there. Because we have to extend certain helping hand them to young generations. Then we can have a very bright future tomorrow for Ayurveda in the northeastern regions. So that is actually my request, that you have to take up the matter in proper platform. And before concluding, because once Khogen is going to vote of thanks, then we are going to heading towards conclusion of this webinar.
So my request is that I think Bhargav sir is also there, Jogesh sir also is there, Shivadatta is there, because I have a limitations as officers. Yes, yes. But our Sangathan is having a network in all these states that we can have the push-up. Yes, sure, sir. Yes, 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 we know that all issue, and we will do needful in this regard. Because in fact, before today, we are not in an organized form. Now we are in organized form. Yes. From today onwards, we have organized form. We have our extension in all the states, so that we have to carry on this legacy and to support them. That is my humble request. Yes, Okay, yes, sir. we will discuss all issue, and for that we will do needful. Sure, sir. Maheshi will prepare all the report of these institutions, and we will take up with the government. Yes. In the near future. Sure, Please. sir. Please Sure, take sir. it. Sure, sir. Hogan, sir. So now I would like to request Professor Dr. Khogen Bosumutari sir, General Secretary, Vishwa-Ayurveda-Parishad, Assam, to kindly deliver the vote of thanks. Good evening. Am I audible? Yeah, you're audible, sir. You're visible also. Just a minute. There is some glitch. Yeah. Good evening, one and all present out here in this webinar. All the dignitaries from the Ministry of Ayush, dignitaries from CCS, Vice Chancellor from University, Sri Krishna University, all the honorable members of Vishwa-Ayurveda-Parishad National Committee, Director NEIAH, and all the honorable invited speakers from different institutions, all the representative of Vishwa-Ayurveda-Parishad from Northeastern region, and all the participants. I, on behalf of the organizing committee on webinar, challenges of COVID-19 pandemic in any India, its management by Ayurvedic intervention and future strategies, and I, my personal behalf, would like to thank, first of all, to Padma Shri Vidya Rajesh Kotesar sir, the Secretary, Ministry of Ayush. He is a dynamic leader, and he's in the Ministry of Ayush, and his leadership, many contributions have been done for the development of Ayush. And thank you, sir, for your valuable time and encouraging and blessing speech. Also, I would like to thank Professor Baldev K. Diwan sir, VC Sri Krishna Ayush University, Professor Vidya K.S. Diwan, Director CCRS, DC Kotoj sir, Advisor Ministry of Ayush, for their encouraging and blessings for this webinar. Also, I would like to thank Vidya Shivadatta Thakur, Secretary Vishwa-Ayurveda-Parishad, Professor Ashwini Kumar Bhargava, National General Secretary Vishwa-Ayurveda-Parishad, Professor Yogesh Chandra Mishra, Organizing Secretary Vishwa-Ayurveda-Parishad, Professor Mahesh Vyas, Vice President Vishwa-Ayurveda-Parishad, for their blessings and encouraging speech for this webinar. Also, in the absentia, some of the dignitaries are unable to turn out here because of their busy schedule or some technical glitch. I would like to convey my thanks to Honorable Secretary, Ministry of Ayush, Sri P.K. Pathak sir, and Dr. Manoj Nesari sir, Advisor, Ministry of Ayush, also SP Mishra sir, Sangrakshak Vishwa-Ayurveda-Parishad, Professor B.M. Gupta sir, National President Vishwa-Ayurveda-Parishad, for their enormous blessings for this webinar. Also, I'd like to convey special thanks to all the invited speakers. So, Guru Nam Guru,
Those are the Guru of Gurus, Professor M.S. Bagil sir, Professor former Director IPCTNRA, Professor H.M. Chandala sir, former Director CBPAC, New Delhi, and Professor K.K. Dwivedi, Department of Kai Chikitsa, State Ayurveda PG College, Varanasi, and Professor B.P. Sharma sir, Principal, Government Ayurvedic College, and Professor B.K. Dwivedi sir, HOD Department of Siddhanta Darshan Faculty of IMS, for their encouraging and enlightening lecture regarding the COVID. They have discussed right from the pathology of COVID in Ayurveda and pathogenesis treatment and how to prevent those that pandemic COVID with the help of our Ayurvedic management. Also, I would like to thank the Director NEIAH for his leadership. This webinar have been possible, and also special thanks to Vishwa-Ayurveda Thakur, the in charge of Northeastern Vishwa-Ayurveda-Parishad, for his advice and guidance. And I hope in future also we'll get this kind of encouragement and blessings. Last but not least, I would like to thank all the participants of Northeastern region. We have presented their situation regarding the status of COVID-19 in the entire Northeastern region and their challenges. And in this seminar, right from the policies by the Ministry of Ayush in the line of research, how we can undertake research to develop measures to combat the COVID-19, and how we can live after COVID. That because we have to exist with the COVID in future also. So with the help of Ayurvedic measures, how we can live or and develop our health system, our life in your future. So in this seminar, right from the very policy, development policy and the treatment, all these things are vividly discussed. With the outcome of this seminar and take home message, we hope we'll be able to tackle any situation which is coming in the Northeastern region, and we can improve the lifestyle of the people in the Northeastern region with the service rendered by our system, by the different Ayurvedic activists. So I thank once again all the dignitaries, participants, and the resource person for making this webinar a success. Thank you all. सबको नमस्कार, धन्यवाद. Kindly, I request everyone, our director sir will say a few words. Yeah, you can. I am thankful to all of you that your kind support and sparing your valuable time is our effort of this webinar is very successful. And all credit goes to Vaidya Shivaditya Thakur ji. Actually, once evening he has talked to me over telephone. So I am thanks to Shivaditya Thakur sir. Then one of my Agras, Professor K.K. Dwivedi, more often encouraging that Guru, something karna hai, not something. So I think we have achieved something. So definitely I am optimistic that we will do something for Ayurveda because this region is having a very rich flora and fauna. And I think now Vishwa-Ayurveda-Parishad is in the hand of very leadership, dynamic leadership. Professor Bhargava is there, and experienced persons like SP Mr. Jugesh Mr. Sir is there, and very good organizer Shivaditya ji is there, and Mohesh Singh is there in Delhi. I think definitely all of them encourage our generations to dedicate themselves for service of Ayurveda. Again, I offer my
hearty and sincere thanks to all of you from my all faculty members and organizers. Thank you very much. गोस्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा जी ने बहुत अच्छा कंपेयर किया प्रोग्राम। आपकी टीम की इंपॉर्टेंट मेंबर है शिखा जी। शी कंडक्टेड इट वेरी वेल। गॉड ब्लेस हर। थैंक यू सो मच। शिखा जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। शिखा जी को बहुत शुभकामना। बहुत ही अच्छा कंडक्ट किया और स्पेशली गोस्वामी जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है। बिल्कुल वेल कंडक्टेड। थैंक यू वेरी मच सर। अरे सर, गुरु जी का आशीर्वाद प्रभु की कृपा आप सब पे बनी रहे। विजयी भव। आप सभी को इस सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, नमस्कार। नमस्कार। Sir, thank you, sir. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. See you, sir. Okay. Thank you, sir. नॉर्थ ईस्ट के कोर कमेटी से कल रात में कॉन्फ्रेंस करेंगे। ओके सर। ओके सर, कैन आई लॉग आउट नाउ? ठीक। ओके, बाय। नमस्कार। Thank you, sir. Thank you, sir. गोपाल।